ओके, चलिए चालू किया जाए फिर। हाँ, Yeah, चालू Madhavi, किया let's जाए। rock. यू नो तो कैसे करना है, बट मैं चालू कर देती हूँ। हाँ, ठीक है। uh, सबसे पहले तो थैंक यू गाइज, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मेनी ऑफ यू विल रीड द बुक। इट इज वेरी वेरी हाउ डू आई से सेल्फ अश्योरिंग दैट आई कैन पिक अ बुक। कुछ तो कर सकती हूँ मैं, हैज बीन डिफाइंड। ठीक है, आगे टू बी ऑनेस्ट आई वाज ऑन द फेंस व्हाइल पिकिंग अप दिस बुक एंड अ फ्यू अदर्स, बट देन मैंने सोचा चलो बहुत दिन से मेरे शेल्फ में पड़ी है तो सेल्फ हेल्प चालू कर देते हैं। ऑन टाइम मेरा बुक के सारे मेरी कंसाइनमेंट आ गई थी इंडिया से, तो आई गॉट द बुक इन माय हैंड एज वेल। इट वाज वेरी, कंसाइनमेंट मतलब बल्क में आती है बुक्स पीयू के घर अरे पे? नहीं, पूरी कंसाइनमेंट आई, उसमें मेरे बुक्स भी आ गए। ट्रक भर के, ट्रक भर के। अभी दिलजीत भाई ने ही कोऑर्डिनेट किया होगा ना। उन्होंने ही भेजा है, मैं वही बोल रही हूँ। मतलब हर तरह के माल का धंधा जो है यहाँ पे किया जाता बिल्कुल बिल्कुल। So it was very nice to kind of pick it up. And to be honest, मैंने first story पढ़ी तो I really liked it. I mean, I had never read such a writing style before. तो थोड़ा सा I was feeling like कि पता नहीं, you know, I am liking it. Maybe I don't know how I will go through the whole book because maybe this story is connecting with me, but maybe I don't know what is happening. And I was really scared कि भाई if everybody will at all attempt it, because the writing style was so weird. I mean, for me at least. So it was like ठीक है, but ठीक है, we gave it a go and it worked fine. Um, coming to the first story, I have made extensive notes. इस बार I am गजब गजब। super prepared. इतना prepared तो मैं ऑफिस के मीटिंग के लिए नहीं होती। ये तो इस ग्रुप की about, कॉमन थीम है। हाँ क्या, अरे वाह। First story, like Nikhil was saying a few minutes back, is one of my favorites. I would not say it is my favorite, but it is one of my favorites. सबसे मजेदार बात तो ये होती है कि you very rarely get to see the perspective of the other woman. So I was kind of pleasantly surprised, and it was nice to see. And then when she सबने पढ़ ले ना फर्स्ट स्टोरी, तो मैं Right. थोड़ा स्पॉइलर कर लूं ना। हाँ, Yeah, and यस then यस। towards the end जब उसको बेचारे को पता चलता है that वो other woman है, it was correct. like Yeah. and the biggest thing that I drew out of it is जब सब कुछ हो जाता है and then you know the guy calls her back and says how are you, and she still says I'm fine. You know, I was like, I stayed there for like good 2 minutes. I said this is just this is just all about, right? I mean, we never say कि we are not fine, and I Yeah. mean, we are not fine, right? So that was something that I kept pondering upon for a very long time. I think my favorite quote also comes from this story is that love drains from you and takes with it much of your blood sugar, water weight. You are like a house slowly losing its electricity, the fans slowing, the lights dimming and flickering, the clocks stop and go and stop. करेक्ट करेक्ट। सो ये आई जस्ट वांट टू इंटरजेक्ट, सो ये बहुत सारा इररेवरेंस के बीच में एक ऐसा डीप बम डालती है, ऐसा ना एकदम से कि यू आर लाइक अच्छा ओके शी इज केपेबल ऑफ बोथ। और मतलब जस्ट वेरी क्विकली हम लोग के लिए बहुत न्यू वाटर्स थे, मुझे आई एम श्योर दिलजीत भी बोलेगा, एक तो वुमेन का ही हमको समझ नहीं आता पर्सपेक्टिव, है ना। फिर इसमें अदर वुमेन का बहुत नुआंस्ड पर्सपेक्टिव था, तो बड़ा फ्रेश लगा सब कुछ लिखने का वो तरीका। तो वही था बहुत बड़ा, एंड बीच बीच में अगेन दीस ट्रूथ बम्स दैट शी पुट्स ना, वो बहुत बढ़िया था। Yeah, true. I mean, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि you will quote this everywhere वाले lines, but like you said, truth bombs is the correct phrase to use. I think this is an amazing start to the collection, I would say. I mean, if there was some other story in the beginning, I would have probably went into a deep thought कि भाई मैंने सही किया या गलत किया, but I think this being the first story kind of did it for me. और बताइए, फर्स्ट स्टोरी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, और any thoughts, any comments, anything that differently stood out for you, you didn't like, maybe someone who did not like the first story.
सबको अच्छी लगी है मेरे मेरे को, को हाँ, नहीं मेरे को तो अगेन, एंड दिस इज जनरल रिमार्क फॉर द होल बुक, मेरे आई वाज वेटिंग फॉर द डिस्कशन आल्सो, क्योंकि वन ऑब्वियसली ऑल द पर्सपेक्टिव्स, ऑल द स्टोरीज फ्रॉम अ वुमन्स पर्सपेक्टिव, द हम्म फर्स्ट वन बीइंग द अदर वुमन, तो दैट वाज ऑब्वियसली वेरी नॉट समथिंग दैट आई हैव रेड अ लॉट ऑफ, है ना, Hmm. एंड दैट एंड सम थिंग्स, मतलब कुछ थीम्स लगी सब में, a cheating husband is a very recurring character, and but then within that also, uh, I wanted to discuss with all of you कि हर story में what is the theme. So first story we know is about being the other woman, है ना, obviously there's also a cheating husband there. um, I also want to go her story का कि what is the general theme here, and Hmm. how does it relate to the women on the panel की भाई on the screen भी आप कितना relate. Obviously I don't find this relatable, but I still found the stories very interesting and still very moving, very engaging, and again always knowing what the other side feels. Hmm. It is always very helpful and interesting. So yeah, I Hmm. mean, again, I don't know where it stands in my favorite books, but it was definitely something very different. Just like Black Flamingo, कि uh, उस तरह का बहुत कम पढ़ा है, and I'm glad I picked this up. I'm True, true. glad that you picked it up and I read it. So yeah, yeah. Yeah, I mean, this was seriously in terms of writing style. I think this was a revelation for me. हम्म। I तो mean, इसमें I when you know. talk about writing style ना, obviously उसका style थोड़ा different है. When it came to that how to talk to your mother वाला story, she हाँ goes in reverse order ना. तो Hmm. I haven't done that, but I want to now go शुरू से, जैसे कि 1920 से start करके go towards, because she has done it in 1970 and then 69 and then 64, ऐसे पीछे को गई है ना. I want to read it in other order also to see, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, एटलीस्ट वन टाइम दैट आई रेड कि अच्छा, मतलब इज मदर्स कंडीशन वर्सनिंग और इज इट इम्प्रूविंग, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा लगा, फिर थोड़ा मिडिल में जाके समझ आया अच्छा पीछे को जा रही है, थिंग्स आर बेटर व्हेन इन द बिगिनिंग, बट नाउ आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड गो टुवर्ड्स द वेरी एंड एक बार टू सी हाउ दैट फील्स. Uh, that was या a challenge for me as well. जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया ना, it took me like good, a page or a two to kind of get used to what she is actually एग्जैक्टली doing. हाँ. एग्जैक्टली. Hmm. उसके बाद और कुछ on this, Deval, you're saying something. Yeah, overall, I feel that this book, in a way, humanizes all the flawed characters or the flawed people that you might Hmm. come across in your life. So it was a good insight on. We are very harsh on forgiving people. So I felt that this particular all the characters in different short stories were so flawed that at least I got to get a glimpse into what would be their perspective, or what pain would they be going through, especially in the first, like the Hmm. other woman, we are always very harsh to judge. Yeah, हंड्रेड exactly. परसेंट Hmm. 100%. So that, and after that first book, first story set that in my, that was the first thing that came to my mind. After that, Hmm. that is what I was looking for in all stories. कि अच्छा ये flawed, हाँ is this flawed character's perspective? Yeah, what is it that they are going through? So that particular theme unconsciously stayed with me, Hmm. especially in that mother story also, right? Like the Hmm. relationship was all obviously, it was like how tables were turned. Yeah, हम्म. right. So yeah. Yeah. I also remember, I can't right now place it कहाँ पे, but there was this story where the lady, she was actually suspecting her husband of having an affair, but he was actually not. एक्टर वाला जो एक्टर था हाँ, ना, सिंगर था जो हस्बैंड, हाँ, रॉस, या हाँ, I can't remember The the name theater of group that. wala. थिएटर ग्रुप हाँ, वाला, Bob. हाँ. so that also, right? I mean, sometimes what we are thinking is not really in हम्म. line with what is happening, and how when it comes to your face this way or the other way, how you grapple to really accept a thing that you've been thinking nahi yahi sahi hai, and you have to kind of change your own perspective. And yeah, that was also something that has stayed with me. I mean, there were many stories. I think there were 9 stories, right?
ये जो story का ये जो हिस्सा था ना, where she gets to know that she was just generalizing his husband and thinking कि उसने past में ऐसा किया है तो he will again be doing the same thing. This kind of broiled into a very big uh, like broth in my own head. I kept going into it every time I read another story, and I thought कि अच्छा, is it really happening, or is it still not what she's thinking? So that was क्योंकि also उसने something. उसने सब कुछ है ना, शी हैज रिटन एवरीथिंग इन दैट फैशन ओनली, कि जैसे थॉट्स आते हैं ना, वो Hmm. सीक्वेंस भी उसने वैसे ही रखा है. आई मीन थॉट्स ही लिखे, हाँ, शी कि इज तू नॉट ये सोच फॉलोइंग रही है, तू, हाँ, शी इज तू नॉट ये सोच फॉलोइंग रही है तो ये लिमिट कर. स्ट्रक्चर. सो Hmm. बिकॉज इट्स लाइक थॉट्स ही वैसे लिख दिए हैं, तो वो ज्यादा कनेक्ट होता है कि दिमाग जैसे चलता है हमारा. व्हेन से फॉर एग्जांपल इफ वी आर डीमोनाइज्ड फॉर समथिंग इन लाइफ, तो हम जैसा सोचते हैं Hmm. उस तरह ही उसने लिख दिया है. मतलब इट इज नॉट दैट स्ट्रक्चर कि मैं किसी और के लिए लिख रही हूँ. उसने सब जगह वैसे लिख दिया, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता Stream of consciousness type. True. है. एग्जैक्टली, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द फ्रेज आई वाज लुकिंग फॉर. तो उसने Hmm. ऐसे भी लिखा है कि अच्छा बैठ के मैं सोचती हूँ कि वो कैसा सोचेगी. शी इज प्रोबेबली नॉट बीन एवरीथिंग, मतलब सारे कैरेक्टर्स तो नहीं जिए होंगे उसने जीवन में, Hmm. बट उसने उसको मैनेज किया कि But you know what? The other thing that I got out of the book is that we all know these people. हाँ I हाँ, mean, करेक्ट. we all know these people in different forms and variations. But well, yeah, maybe she's also drawing from her own life in a way. Maybe she's a मतलब wife लगा somewhere, or तो maybe ऐसे ही, she's a friend somewhere. Yeah. इट वाज टू रियल. लगा तो ऐसे ही कि शी हैज बीन इनटू ऑल दोस रोल्स, एंड दैट्स गुड इन अ वे. पता नहीं. And this is her first book. This is her first book. So in the So first story, I think मैं वही अभी वो मैं अपना highlights check कर रही थी. So there is this thing about lists. हाँ One मतलब उसने this guy or somehow she comes to know that his wife or makes lists, and she हाँ starts making lists, Yeah. pros of cons of being, she's trying to kind of get some because lists are a form of control, right? She's trying to हम्म, get some sort of control ki, how do I she knows it's going to end badly, right? She's in love and she knows it's going to end badly, and she's still trying to grapple and somehow come up with some form of control. That's fascinating the way that's been written as well. yeah. And being the other woman, कैसे she gets obsessed with the Creating lists. lady she thinks कि उसकी wife है बेचारी. But I mean, I don't know. I mean, it was sometimes very unsettling also for me. But I mean, this is what happens really. कैन आई बी ऑनेस्ट, मैंने अभी निखिल भाई ने बोला ना कि द स्टोरी टाइटल्ड हाउ टू बी द अदर वुमन, या आपने बोला पीयू, पता नहीं व्हाई मैं अभी तक सोच रहा था द स्टोरी टाइटल वाज हाउ टू बी अ वुमन, नहीं. एंड बिकॉज द टाइटल ऑफ द बुक इज सेल्फ हेल्प, तो इट वेंट की अच्छा, it goes with हाँ that theme, like it felt how to be a woman. And I'm just realizing, although I had realized कि it was about being the mistress, लेकिन I thought कि this in some meta sense is how to be a woman is कि almost every woman goes through this, being the other woman, and you I'm are just either realizing either or, right? uh, You've always हाँ been हाँ you've yeah at least seen someone in that mm, mm, that is true. Yeah. exactly yeah नहीं, but yeah Also, one thing that I constantly kept feeling Mm. while reading this was that um, she knows something is wrong. Hmm. You know, mm. it's like you are sort of anticipating some kind of a news that she will get, or some kind of information that she's going to get. I felt like I was almost watching like a thriller, the way her thoughts were so scattered in a way. Mm, Hmm. You're trying to sort of piece it all together, make sense of it. At the Don't you same think that time, makes it more real, Nandini? I mean, that is also yeah, something that I also exactly. thought. It's like all over the place. When you Yeah. read it, it is like all over And the place. and when I started reading it, I was like, like you were saying, na, the style is very different.
but it actually works, and I don't know, somehow it felt like I'm reading a screenplay, you know, where there are also a few bits of um in terms of what the character is going through, and so I like that. Also, you also get the sense that she knows she's being manipulated, um, but she still goes with it, you know, and possibly the man thinks he's really smart and he's getting away with it. Yeah. But little does he know that she knows everything and she's still in it. Yeah, Yeah. and You know? most of the times this is what happens. That Yeah. that हमको पता है हम स्लिप कर रहे हैं, लेकिन और एक कदम हम जरूर बढ़ाते हैं ताकि we literally slip and fall. That is And that yeah. there was a line, I don't know if I can find it now, something about where he says that the woman he lives with is not his wife and he's separated from his wife, and his wife's name is Carrie, Carrie, and she immediately thinks of a joke. What would you call a woman who has no hands or legs? And the joke is Carrie. And you know, that thought was so funny to me because um, I think a lot of us probably do this in a very serious situation. Your mind thinks of the most funniest thing, you know, Yeah. and you're trying very hard not to smile because you've just entertained yourself with a joke in your head. And it's so strange that her life is so much about this man, and at that moment of like, so I mean, I guess crisis, and she's anticipated it all this while. She's thinking of a joke, you know. I mean, इससे बड़ा तुम्हारा क्या बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज्म क्या है कि तुम ऐसे Exactly. I mean, आप जब join नहीं किए थे, we were just chit chatting and I was telling Nikhil and Diljit and Ash that मेरी जो therapist थी ना, this is the first thing that she used to prompt me at, because when I used to share things with her which was difficult, right? I mean, कोई भी difficult situation या something that is very sad, I used to laugh it out and tell her. And like, when I'm like iterating the whole situation or a story, I mean, kind of my feeling, I used to kind of laugh it out and say, and she used to always tell me, why are you laughing? There's nothing yeah to laugh. You are just discounting the feeling, you are just dismissing it altogether with laughter. Don't yeah do that. It is problematic. And yeah this is the I was reading this particular story and also in the rest of them, and I constantly had this in mind that she's exactly doing this. And if yeah my therapist is reading this book, she's going to tell this story. Stop discounting your feelings. ये हेल्दी नहीं है क्या? ये तो हम करते ही हैं, ह्यूमर Not करने healthy. It is it. में। It I is mean, as healthy as a fast food meal in the बर्गर morning. बर्गर इस मामले में दोनों genders equal हैं दोनों ही करते हैं ये करेक्ट करेक्ट Acha, yeah. I've highlighted a couple of things and can you please help me thoda give context to them? So, and again, it could be very straightforward, but मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया. And this is just clever writing. तो वो एक शुरू में था बिल्कुल. तो it says, return to your book. Emma is opening her window, thinking of someone. What weather, you hear him sigh, faintly British or upper crust Delaware. Glance up, say, it is fit for neither beast nor vegetable. What does she mean by this? It is fit for neither beast nor vegetable. She's describing the weather here. She's This is one of her describing the clever. British weather, I'm sure, which is not fit for Is anything. this a common saying? हाँ, तो is this like a common way to say ऐसे unpredictable weather के लिए? This is one of her वही Yes. clever quips ना.
Yeah. when she says, okay, so She it's must neither be beast. describing the British weather. That is what came to my mind सबसे पहले. Okay. हाँ, जो पीयू बोल रही है वो सबसे ज्यादा मतलब जब ऐसा लगता है कि वही सही होगा, क्योंकि मतलब नथिंग Right, हैपेंस right. देयर, राइट? मतलब या Okay, and then there was the second thing where I think this guy is talking about his profession. She asks, "What is intellectual property law?" He grins. Oh, you know, where leisure is a suit. इसका क्या मतलब हुआ? सूट मतलब वो लीगल सूट होगा? आयुषी हेल्प अस आउट. वही होगा. Leisure is a suit. मतलब हाँ, I think उसी वेन में होगा कुछ कि I'm just trying to put it कहाँ पे था ये and then Which story was very that? beginning. This one. first. The first story only. तो the guy is talking about his job ना, तो she says कि हाँ. क्या करते हो? तो he is an intellectual property law. I think ना his wife, supposed wife is in intellectual property law, I think. अच्छा. Yeah. And the responses were leisure. He says, oh, you know, where leisure is a suit. Wow, Ayushi, you can use it somewhere. I didn't understand it. Leisure is a suit. मतलब कुछ भी Intellectual लेजर property करना law चाहोगे Leisure तो is something that you enjoy and how लॉस is हो जाता है. ये तो नहीं समझा. I think होगा कुछ. Yeah. We need to think about it. थोड़ा सा. हाँ. Is it Context के आसपास. is it like any form of sin or leisure or luxury it becomes a lawsuit? ऐसे कुछ मतलब Probably. IP is Again, there are something that certain you clever use things to ऐसे create जो something that you enjoy. वैसे so music is an IP. वैसे तो हाँ. leisure is a suit. Maybe that way. Oh, maybe. correct. Yeah. Right. So, say for example, the things that used to be free, maybe in medieval times, now हाँ. they are a lawsuit. Correct. So, say for example, अभी मैं अपने YouTube पे गाने में नहीं चला सकता ना, because it's a copyright strike. ऐसे कुछ Okay. मतलब Got something it. that used to be freely available, now it's under the legal वैसा. Correct. Because it's this person is a So copyright everyone is lawyer claiming and ownership for intellectual everything. property lawyer. And मतलब from an artist point of view, not disagreeing, मतलब वो गाने बनाते हैं, they want their stuff, but just मतलब हम पहले हमको फ्री म्यूजिक की जो आदत लग गई है बचपन से. Correct. Are we talking about piracy? We're not talking वही about होगा मेरे को piracy. लगता है. बोलते हैं आगे continue. Yeah. And then there is a list of she has made a list of all the lovers that she has ever had. It's Warren Lasher, Ed, Rubberhead, Catapano, Charles, Dietz or Keats. So she doesn't even remember it's Dietz or Keats and Alphonse. Wow. But सही है यार. This is how we should. ठीक है ना, actually नाम भूल जाता है continue. इंसान, ऐसा कंफ्यूजन होता है. हाँ, फर्स्ट नेम याद रह गया बहुत नहीं है. लास्ट. चलो good. Let's move on to the next one. What जी. is seized? क्या था मैं? What is seized? बड़ी sad सी story है ये. इसमें कौन सा? हाँ. Yeah. What is seized? यार बहुत याद भी नहीं है मुझे. हाँ, वही करना पड़ता है. वही मेरे हाँ, कोई summarize I कर mean, सकता what है is कोई? सबसे बड़ा, I mean, what it did with me is उसके first few lines में you get to know that the narrator's mother has died, and I immediately went to Albert Camus and then I started thinking about Outsider and I was like, oh no, ये वैसे ही होने वाली है क्या? But then yeah, इसमें is the half Indian brother ना, मतलब half Indian, sorry, half brother is Indian, James, वही वाला ना ये, foster brother, sorry, yeah. I'm still trying to remember the story. अरे इसमें वो होता ना, father is very popular in the Cool, community, हाँ, but not very warm with the mother. Is this a theater group? नहीं, that comes later. That comes later. Maybe the father is a singer or something, right? Father is a performer and everyone in the community loves him. Because but obviously घर पे दिलजीत, बहुत बेतों की बात करता है. हाँ जी.
ऐसे हो गए. अरे ऐसे हो गए. आप सही है. हाँ, यहाँ पे एक देवर, I'm reading out a line which I have noted. पता नहीं if you can remember it from that. The rooms in our house were like songs. Each had its own rhythmic spacing and clutter, which, if you crossed your eyes, became a sort of musical notion. A score clusters of 8 notes, piles of triplets, and the wooden roundness of doorways like clefts blending in a kind of concerto. I don't know if that helped, but that was it. This, I think, is another thing characteristic about this author. ये जो जिस भी स्पेस में है, उस स्पेस को जैसे परसीव करती है थ्रू साउंड्स, थ्रू स्मेल, थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ Exactly. कलर. मतलब लिटरली ये जो माइंड ब्लोइंग इसके वो हैं. आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट. Yeah. इसी में इसीलिए पता है, I really like, I mean, I think the cover is apt because उसमें also ना, I mean, she uses so many like day-to-day things in the entire book to signify kind of the situation or the correlation with life. तो इसीलिए जो cover है ना, जिसमें ऐसे shaving वो रखा है, scissors रखे हैं, I think toothbrush there's an रखा है. other टूथब्रश नहीं, टूथब्रश नहीं है, बस शेविंग Toothbrush भी है, रेजर है, टूथब्रश भी है, टूथब्रश भी है, दवाई भी है, दवाई भी है. दवाइयाँ भी है, पिल्स. Yeah, so I mean, ये मुझे लगा कि she has a very like Aishwarya said, बहुत अच्छा knack है उसका. I think she can sit and look around and define, connect it to the current perspective and write it down. I mean, that is So, something nice. the story of this is that they're living as a family, right? The mother, father, this daughter, and the adopted son, right? Fun. And father is very popular in the community. Everybody loves him, but that's not the father these guys grew up with, right? For the kids, he's quite Yeah. indifferent, right? And there's this scene, and this is very obvious, where there is one performance जहाँ पर the mother takes him and they are rehearsing, and everybody around the theater there's this thing where the children and mother are hearing the rehearsal, and what they hear is everybody sitting around in a group and ooh matlab kya joke mara, and they're very Yeah. mesmerized by their father, kya this personality, right? It appears that way. And then the kids, जैसे ही break होता है, the kids run up to the father just looks at them, oh you kids, he doesn't know what to say, वो अपना piano बजाना फिर से start कर देता है. And then the kids turn around and they wave to their mother, and mother is like hi, like she's like warm and the way she is. And then there's this thing where I remember this distinctly, that the child comes back to the mother and the familiarity of it, sitting and jumping in her lap, something about that. Mm-hmm. And And I think she remarks something like smart people or talented people have busy minds, yeah, so they exactly. can मतलब इसमें कि they can never, कि family comes मतलब Right. it comes at the cost of families ignoring the family and all, because they have to And then I please think please the eventually mother society. tries to end her life once, or she's found at the lake. That's the same one, right? Yeah. Yeah. And they drag. But that is the theme, no? Ki she, well, towards the later half of the story, ki she, it turns out that mother is not sound of mind and is trying हाँ, to end तो her life, and बीच में they talk about we brought her back from the lake, and then in the end you like kind of realize that she is actually now finally successful in kind of Yeah, ending her and life. then I was 15 when my father left us, and my mother had a mastectomy. So the father leaves, obviously, and then the mother lives with them, right? Uske baad hai. And this is not the point. This is not the one where she goes to. Yeah, this is also the one where she's off to the college. Dear mom, thanks for the cookies. I got them yesterday. Was sorry. हाँ, the letters that she writes. Yeah, the letters she writes. Yep. So, Yeah. and somebody keeps repeating, the grandmother probably said
what is beautiful is seized. Hmm. Yeah. Though when I was reading this book, I mean story, I was pretty sad about it and everything. But today, when I'm talking about it, it has already left my brain, so I don't know if it is still my favorite one. But when I was taking notes, I actually wrote down that this could be the one. There's one thing that But this, one quote that I really loved. I'm sorry to interrupt. ये वाला मुझे I'll just wrap this up after it. And I remember, I think this is the one story in which the mother reflects upon the relationship the father, like she shared with her father, and I think this is the one. But when once she's describing her husband, she says to the daughter, matlab, I think, yeah, I don't know whom she's speaking with. Your numbness, my mother cries softly, is something perhaps you cannot help. It is what the world has done to you. But your coldness, that is what you have done to the world. मतलब I loved yeah. that line. तुम numb हो Hmm. सकते हो, but जो you're cold about things, that's you. Yeah, true. I also have that written down section. इसमें what I tried to make sense of was Hmm. कि was the father cold towards his mother because वो पहले से ही, because obviously the father knew that she's not perfectly of sound mind, और बच्चों को बाद में पता चलता है, या she develops that condition later on, क्योंकि father has been shown as cold शुरू से ही ना. Hmm. Yeah. But you see, that is not a reason to be cold, na. I would think Then कि, it is not, but I'm thinking ki, uh, was that father's justification ki he was not interested, because she talks na ki he comes as a very creative person, but I think the mother told the daughter ki when they make love he doesn't even look me in the eye Hmm. and is looking to us side. So could that be कि वो पहले से बीमार है and father has already given up on her, या maybe has no love for her. right? Maybe it is inherent also, because if he's only cold to the wife, that would be like, this could support that argument. But he's But also kids also, kids, right? kids also, So yeah. I mean, it is very significantly shown in a way. Also, I think we are very different people when we are with our family and when we are outside in Mhm. professional situations. We are Yeah, very fair, different. fair enough. So Yeah. 100%. maybe that is also something that comes out. The way I imagined it was that um he probably feels stuck, Hmm. he feels that if it was just him, he could have probably achieved much more. And he seems True. like a very hungry person in terms of attention, Hmm. but Mm. not from his family. Hmm. So I think maybe in trying to sort of reach more and more people's appreciation, maybe he sort of either forgets or never really um, thinks about the family in a manner in which it's not that I guess he loves them, but he probably doesn't feel as responsible for his wife and children the way the mother does. Hmm. I mean, if she's not of sound mind from the beginning, why will a father let the children Leave. be with the mother all the Yeah. time? Yeah, So yeah. He actually I leaves them. think, So yeah. So When she was 15, yeah. so I felt that it's probably something that she developed later. Later on. And Yeah. also it felt like, I mean, yes, of course it's sad, but it also feels like a very sort of a universal story Hmm. where mothers, it's an unsaid rule, that mothers have to take care of everything. And Mm. whether a father is an entertainer or not, he is um, not going to look into the wives or the children's everyday, things, unless he's somebody who's really
interested or caring about the family. But Right. ऐसे कितने ही लोगों को हम जानते होंगे जिनके Hmm. घरों में ऐसा ही होता है कि the I woman think. runs, yeah, the woman runs the house, does everything, and um, in some cases she doesn't get any love from her husband. um, Hmm. and that's sad that when you do so much and then it's not acknowledged, or it's not even looked at as something significant. Right. So I think um, maybe that made it worse for her even when um, she developed some kind of a problem mentally. Possibly, yeah. So it may have made it worse. And we do see, right, that the children go away. Mm. So obviously, I mean, this we've seen with all our parents, right? That when any of their children go away, they feel Hmm. suddenly, especially if it's if you have a mom who's always lived at home, Mm. they suddenly can't find a purpose. They don't know what. Incomplete in life. Yeah. 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 So True. I don't know. This is how I sort of imagined it. And इसमें भी the whole story was ऐसे ना कि she was going back to her mother's pictures and then giving the context to, like, she goes, this picture from when she was this picture from when she was, and then she Hmm. would narrate a whole story around it. इसमें एक something that I had underlined also, my mother liked to sing, and this was very early on. My mother liked to sing, but she would wait until my father wasn't around because he would Hmm. correct her pitch and straighten her posture and insist she use Oh her yeah, lungs that and part about diaphragm better. So obviously, matlab, she must have felt obviously trapped also. Na? He might have felt trapped, just Nandini said, ki he could have probably achieved more things if this, uh, so to say, lame woman was not around me, and she probably is burdened by his brilliance and doesn't feel कि she can be herself because this person is always correcting her or expects more of her, या उस तरीके से. So she probably वही, as Nandini says, कि all of these and once her children left caused so much of mental trauma that she developed a sickness because of that. Yeah. Hmm. One of the quotes that I have highlighted from that story is, and I now remember it, is "Old men destroy women." My mother wrote Mm. to me years later. They woo them with something perishable that they bring out for show, something annexed to their souls like fake greenhouse. Let you in, and you think you see their life and vitality and sun and greenness. And then when you love them, they lead you out into their real soul, a drafty, cavernous, empty ballroom, inexplorably arced and vaulted and mocking you with its echoes. You hear all you have sacrificed, all you have given, landing with a loud clunk. They lock the greenhouse, and you are as tiny as a figure in the architect's drawing, a faceless splotch and a blur of Hmm. stick limbs abandoned in some voluminous desert of stone. Mm. Yeah, this is something that I've also underlined, Devil. Yeah, this greenhouse metaphor has Yeah. kind of stayed on for Yeah. very long in my mind. Yeah, the line itself, the cold men destroy. Yeah. अब आया ना मुझे याद, ये वाले कोट से याद आया. So this one really struck me also, and मेरे को तो And लगता है कि हाँ. probably in a country like India, men are not taught to emote ना, अपने especially अपने father वाला generation, right? तो वो वाला coldness तो हमने देखा है इधर Hmm. उधर सब ना. 100%. तो वो सब इधर, मतलब when I saw her also talking about it, I was like कि हाँ ठीक है, maybe European, Western, whatever, but the women from that civilization or whatever are also writing the same stuff. Yeah. Very, मतलब बहुत ही अजीब लगा कि okay, it's not like regional, but हाँ, this one was a line. And there are so many ways of saying it, but उसने बहुत छोटे से उसमें लिख दिया cold men destroy women Yeah. without beating around the bush. So, Destroy families, yeah. and I've seen यार, मतलब ऐसे if you see well, apart from your immediate, was like when you see the faces of the wives
the husband is literally just the provider. मतलब वो समझ आता है, and वो मतलब वो दिख जाता है कि you might be And meeting that uncle auntie for the first time, but you understand looking at that. It's such a common thing. Yeah, Diljit bhai. and वही जो आई थिंक पीयू ने भी बोला था कि that person in the family and that person in the society are two different Exactly. beings. Yes. कि हंस खेल रहा है, is very vocal, enjoying, And and that the never same happens when the person, wife is around, yeah, or in the family. It is a dead person basically, कि कुछ नहीं, emotions नहीं है, कुछ नहीं correct. है. I Yeah. keep coming back to the Indian context. We have seen so many people who are very high functioning in the society, Yeah. probably are inviting everybody home to come, and we are the best host ever. But the moment the guests go away, it's eerie silence. मतलब कि अभी हो गया. We have Uncomfortable. Yeah. हाँ, हो गया. And to fill that emptiness is why the hosting also happens, by the way. Always having people around. तो मतलब पता नहीं, इतना तो वो लिखना भी नहीं चाहती थी, but that words are like it's very true. एंड And इसमें ना, हाँ सॉरी, बोलिए. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि men generally, हम लोग भी कोशिश ही कर रहे हैं, बट पिछले जनरेशन के men generally feel that it's enough to provide. अभी और क्या करेगा मैं? It's like that ना. बच्चे की जान लेगा You कैसे? expect me to talk to you also now about your day. वैसा हो जाता है. हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट भी चाहिए है. ये कैसे? Yeah, that way. So, and he wants to be finally me at home, which is the cold, grumpy me. But this is really me. ऐसा. So yeah, sorry, बहुत बोला, but that line was very. नहीं, this story deserved this. And when I was talking about being a different person inside and outside, I think the quote that there's this line, right, where the kid, I think, says all his card tricks were variation of this. Oh, how you do that, James? You want to know? गैस कैसे कर लेते हैं? Yeah, हाँ, मतलब. Yeah, also Nandini also focused कि he was always hungry for attention. So Correct. I think. एंड इसमें आई थिंक मैंने ग्रुप में भी डाला था, when the part of her being sick and them trying to rescue her from the lake and वो सब चीजें भी, this story and one more story, it reminded me very much of M and the Big Home, because similar themes थी ना. mother was going through sickness, and the kids were taking care of her, and the husband was taking. So this sort of reminded me of that book, क्योंकि काफी general उससे match हो रहा था कि when someone you want to take care of, and they don't want to live, but you somehow have to take care of them. How difficult and how annoying that can be sometimes when you love that person, but they have given up on life, and you are somehow trying to save them, both physically and metaphorically. Yeah. तो वो book याद आई मेरे को. Yeah. To be honest, hearing the men in this round talk about this so openly, and it is great, guys. We have moved so forward, and we are talking about Indian men, and you guys are Indian men too. The fact that you realize that this is such a bigger problem is amazing. Because we Yeah, and that is why होता क्या है पता है? सॉरी दिलजीत, एक बस मैं ये कहना चाहता था कि होता क्या है कि इसका फर्क हम पे भी पड़ता है, because we were also kids to these men, or we were around these men ना. Yeah, true. We were not always Indian men. तो वो coldness reflect होके आती है हमारे ऊपर, and that frustration, 100%. that irritation from the mom also, or from some other woman, बहुत बहुत widespread, rampant है मतलब. And Indian men in general are not encouraged to be entertaining also to their spouse. Yeah, kind of कि I will bring a smile to your face. ये सब तो है ही नहीं सिलेबस में. मैं आ रहा था ऑफिस से, तो मैं दही लेके आया हूँ ना, तो ये दही जो मैं लेके आया हूँ, और क्या चाहिए तुमको? It's a very big thing they are doing. कि तुमने बताया नहीं, फिर भी मैं बेसन लेके आया क्योंकि मुझे पता था पकोड़े बनने वाले. You understand? ये बहुत बड़ी बात है. एहसान कर दिया टाइप्स. करेक्ट. तो मतलब एंड I love how पकोड़े बनने वाले is taken for granted, but let's continue. नहीं, क्योंकि हस्बैंड देख लिया था कि बारिश हो रही. वो
में बारिश समझ आ कर नहीं आई, I got the उसका context. मूड कर गया था पकौड़े खाने का, उसका मूड हाँ कर गया था पकौड़े खाने का का। मूड कर गया था, तो बिकॉज ही वांट्स टू ईट पकोड़े ही ब्रॉट बेसन, अ, तो ये बात। एनीवेज या पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस कि हम जब घर पे काम करते हैं, राइट, लाइक वी वीमेन व्हेन वी आर वर्किंग एट होम, सो इट इज वेरी नॉर्मल ना, घर वाइफ है तो घर के काम कर रही है, ठीक है ना, बट जैसे हस्बैंड स्टार्ट्स हेल्पिंग यू एंड इट बिकम्स अ हेल्प, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज अ हेल्प, इट इज अ पार्टनरशिप, राइट, आई It's मीन called patriarchy, Pew. हाँ तो आई ऑल्सो हैव बीन गिल्टी ऑफ इट। जब मेरे वाइफ ने मेरे को एक मीम दिखाया कि देयर इज अ मीम जहाँ पे एक रेसलर ऐसे बेल्ट जीतने के बाद खुश हो रहा है, और उसमें नीचे लिखा हुआ है कि माय हस्बैंड आफ्टर मूविंग दैट वन नीडल। सो एग्जैक्टली। हाँ, तो बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि हेयर एंड देयर आई हैव नॉट बीन गिल्टी ऑफ इट, बट हाँ वो है, मतलब हम कुछ अलग कर रहे हैं। दैट इज डिफरेंट, It's मैं also one of the things that just this reminds me of is when a father is taking care of the children, it हाँ becomes हाँ babysitting. हाँ, या Very, सच अ it's गुड फादर, parenting. सच अ गुड फादर। Yeah, such a हाँ good such a good father. He's father, babysitting the kids when, and the woman is going out for lunch or movie or with their exactly, girlfriends. करेक्ट करेक्ट। so true, and यूजुअली it इट्स is नॉट इवन लंच और a मूवी, इट्स की मार्केट गई है सामान लेने तो। that is being cooked, ऐसा नहीं है कि और तुम महान चैरिटी कर रहे और हो। पैट्रियार्की का ब्रेन वॉश इतना खूबसूरत है कि इवन द वुमेन्स थिंक सो। Yeah, absolutely. सच अ Agreed. स्वीट वन आई हैव गॉट, मैंने बोला I'm so lucky to have कहीं a ना husband like. कहीं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट, हाँ वी हाँ हैव ब्रॉट अप सच मेन, वी हैव लेट दैट हैपन, सो ऐसा नहीं है कि इट इज ऑल वन That साइडेड। is due to the करेक्ट conditioning. ट्रू। नहीं तो वो इनेबल तो होता है, जैसे अभी भी मतलब आई हैव अ सन राइट, सो मीनल हैज टू बी रिमाइंडेड कि कर लेगा वो काम ना, दैट राजा बेटा नहीं बनने देना इज ऑल्सो रेजिंग अ फेमिनिस्ट सन इज वेरी या काउंटर, वेरी काउंटर, क्योंकि किड्स जितने भी इनोसेंट लगते हैं दे कम इन एंड दे क्विकली अंडरस्टैंड द पावर डायनामिक्स, कि हो जाएगा बिना किए, ये लड़के समझ जाते हैं बहुत ट्रू जल्दी। ट्रू, तो, या बाप रे हाँ, कहाँ पहुंच गए वी हम। हैव वी हैव इतना तो लॉरी बोर ने भी नहीं सोचा Actually, सोचा ही नहीं next होगा story या, इसी में blend in कर जाएगी. The next story is Kids Guide to Divorce. Yeah, हाँ, क्या क्या किड्स क्या। kids किड्स Guide guide to to गाइड टू Divorce. divorce. डिवोर्स। हम्म, छोटी सी स्टोरी है ये बहुत ना, बहुत छोटी story है, हाँ but छोटी है। Cute the है. last part is सी very. सी ये स्टोरी तक ना, ये थर्ड स्टोरी तक मुझे लग रहा था कि इट्स ऑल जस्ट वन स्टोरी, कि देयर ये ऐसे हुआ, वो पहले शी इज टॉकिंग टू, क्योंकि पहली स्टोरी में भी ना कि शी टॉक्स टू हर मदर, जो द है, अदर हाँ वुमन। तो फिर इसमें मुझे आया कि वो अपने बचपन में गई है, फिर मुझे अच्छा पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, अब उसकी What? स्टोरी है, फिर वो थोड़ा आगे जाके नहीं नहीं ये अलग अलग है। तो फिर आगे आगे जाके रियलाइज हुआ। Yeah. Deval, you were saying something? This story, the end part where the mother asks, "Ke, हाँ, how did it go?" He wants to ask a lot of things, but then she just yeah. asks, "Ke, कैसे रहा तुम्हारा 3 दिन का stay?" But she and even the daughter is very smartly leaving out what would have hurt her mother. Daughter था? So this अच्छा, मुझे लगा was son था. Okay. या नहीं मुझे नहीं, भी सारे में डॉटर है। सन है, सन नहीं था Daughter क्या, होगा. डॉटर, मेरा आई ध्यान थिंक नहीं गया, सारों मेरे में को I याद डॉटर नहीं ही है. think it's a daughter. Possibly. या उसने open to interpretation रख दिया था. हाँ, इट इज नॉट लाइक मेंशन, So maybe I for some reason interpreted कि वो daughter थी, नहीं, तो क्योंकि it that is is so something damn that sorry interesting. but मेरे को भी डॉटर ही लगा, बट मैं तो वही सेम स्टोरी ठीक समझ है, रहा था तो। एनीवेज, तो हाँ, दैट या डज नॉट फिर आप अलग मैटर चल रहे हो. चेंज, आप तो अभी भी कनेक्शन ढूंढ रहे हो. या I am not trusting you right now. maybe it is left to interpretation. हाँ, आई That थिंक I don't reason remember it at all. मुझे याद नहीं है वो, मतलब it's कि that इट्स story वेरी when वेरी the ब्रीफ। child and the mother are watching TV and चिलर one चिलर, I लेट mean, I don't लेट लेट remember चिलर वन। anything specifically mentioned. मैंने भी बहुत छोटा सा, आई थिंक आई हैव जस्ट रिटन वन लाइन ऑनटू इट, दैट द ट्रॉमा ऑफ हियरिंग योर पेरेंट्स आर्ग्यू इज वन दैट नेवर लीव्स। yeah. हाँ ट्रू ट्रू ट्रू।
Very true. Very true. See, Hasn't left me still. you know what? We are very harsh on our parents. Matlab, Yeah. it's it's very difficult to adult as in a marriage. Abhi kya hota hai? Even the smallest of arguments that me and my wife have, the nakshatra stands in the middle and doesn't want it to happen. It's the smallest of arguments. और अब मेरे को समझ में आता है कि how we kind of judged our parents. यार, they were going through a lot, right? तो yeah, this is very true यार. जो ट्रॉमा पता नहीं, अब वो बाद में समझ में आता है कि we should not have the trauma, but है, वो बिल्कुल है. Very true. This line has rung home for me. I mean, I think uh, it's true for everybody, I guess. yeah, I mean, it's just, yeah, I- this is why the only line I have written in my notes is this, because that's it. I could have closed the book then. नहीं, but as humans अपन अपना entitlement देख रहे हैं. How dare my father and mother are not loving all the time. समझ रहे हो? But that's how it is. That's how it is. But I also feel that we've also been very accommodating and forgiving to our parents. Exactly. तो जितने Exactly. हुए हैं झगड़े इस हिसाब से तो मतलब yeah, correct. Yeah, I mean, the fact that we think कि भैया parents है तो उनको we are kind of conditioned in a way to put them on a pedestal. Pedestal. And जो भी हमारे लाइफ में होता रहता है we kind of think कि यार मेरी मॉम ने ऐसा नहीं किया होता ना, then I would have a straight line of thought for this or that. I mean, they are human beings after all. हम गलतियां करते हैं उतने एंड वो झगड़े वो आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज भी कर लेते कि ये तो होता ही है विवाहित जीवन में. हाँ, आज तो भी होता है. अरे दुनिया में सब चीज नॉर्मलाइज हो सकती है. और वो recurring fights है ना, वो Recurring fights. ऐसी चीजें जो सॉल्व नहीं हो सकती कभी. And कभी होते ही नहीं है शायद. I mean, there are things of that have never settled. मतलब So every maybe- discussion on this group somehow becomes about parents in a way. I think we may have a problem. बहुत ट्रॉमा है, बहुत have a ट्रॉमा. problem. Yeah, true. Let's talk about grief की जगह let's talk about parents. ऐसा. Yeah. हमारा ग्रुप का नाम हमको सोचना चाहिए, थोड़ा चेंज The last The part that Kids they were Guide doing to that- Divorce is a good name for a group. The last part that you were talking about, right? How did the last 3 days go? Leave out the part about the lady and the part about the beer. Beer. They went all right, kind of a thing. सब कितने इंटेलिजेंट भी होते थे ना बचपन में. I have done this. Manipulative. They know what to say. I have like Kids know what to told do. things that would not bother my parents more. So honestly, I used to have a very hard time in school. I know Nikhil, Deval, Ash, you guys know this. Yeah. But मैं जब घर आती थी ना, I used to like change the course of my coming back home. So that bus journey मुझे ऐसा लगता था घर में जाके मम्मी को ये नहीं बताना है कि मुझे आज टिफिन खाने में कितनी प्रॉब्लम हुई और all of that. Because they were already having their own struggles. Yeah. This is why I just ran away from this story. Like पढ़ के बंद करके सो गई. Let's not go down that rabbit hole again. Yeah. True. मतलब मेरे को भी समझ आता है कि the kid comes to you once and twice and he understands even this adult is not capable of handling me. Then he starts locking things away. Yeah. कि मैं figure out करेगा कैसे तो, right? So I now have the other perspective also, right? तो मैं देखता हूँ कि अभी काफी चीजें खुद process कर लेता है वो, because I can't really be there for him all the time. So it's very similar to what we used to do, and at a very young age. मतलब काफी कुछ हम लोग प्रोसेस कर लेते थे कि अभी आज बुली हो गया तो ये घर पे बताने की जरूरत नहीं है कि आज बुली हुआ था. Yeah, सही बात है. And that is what I was also commending myself on कि भैया मुझे क्या पता था यार जब मैं इतनी छोटी थी कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है. You somehow know. I don't. Yeah, and as adults also, right? Like, when I mean, we have different sets of people that we confide into for different reasons. So you know when to be open to that person in what situation. And so I think it sort of is
it percolates to in our adulthood also. It's not just Yeah, childhood. Yeah. adulthood में I think we have the We can move to the next experiences story. that we've had to help us decide all these things. I think मतलब हम ठोक पीट के सीख जाते हैं कि हाँ कब कहाँ मुंह खोलना है कब बंद रखना है. Yeah. So I will give you one recent example, नक्षत्र के perspective से. When we were outside, right? तो मेरे पत्नी के पास work permit नहीं था. So she was not working for a bit of time. And when we came back here, she started working. So he told this to my sister, कि I'm so happy for my mother that now she's working on her own. 7-year-old. Nice. We didn't know कि he has a view about these things. हमको नहीं पता था कि उसका एक कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है इस पे, बट Wow. we were very surprised. And he didn't tell us क्योंकि हम तो बेवकूफ हैं. You lock away things from parents and you tell to the sister. मतलब मेरी सिस्टर में से 10 साल छोटी है, राइट? सो उसका फ्रेंड वाला फील आया होगा उसको, राइट? सो she came and told us कि this is what he feels. अच्छा, इसका भी एक व्यू है इस बारे में, मतलब उसको पूरे टाइम मॉम मिल रही है. हाउ डज ही केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स? व्हाई वुड ही वांट हिज मॉम टू गो अवे और बी इन मीटिंग्स, राइट? बट नो, he was more than happy. And he could have easily been conditioned, I mean. करेक्ट, यही तुम्हारे लिए सही है. हाँ. बट नहीं, मतलब हमने उससे मतलब ऐसे पता नहीं उससे कोई क्यों पूछेगा कि नाउ शी इज गोना गो वर्क. मतलब मे बी वुड हैव आस्क्ड, बट हम कहाँ पूछते हैं ये सब. बट ही हैड अ व्यू एंड ही सपोर्टेड इट. मतलब just saying कि मतलब we don't give 7-8 years old अपना कुछ credit. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है आजकल के बच्चों. I don't know. I don't know. I'm very surprised. Yeah. Yeah. ठीक है, चल अब नेक्स्ट वाले में जाए. हाउ कैसे The कौन सा house है? story हाँ. is that short of it is, may I skim through it, that this is couple where the girl wants to leave. That's it. She's waiting. And that guy हाँ. develops a terminal illness of sorts, right? I mean. And she wants to leave. जाना है बट एग्जिट पॉइंट नहीं मिल रहा है. Exactly. He can't figure out how to. And then she ultimately does when he recovers. So that. उस स्टोरी का मैं एक हाईलाइट देख रही थी, एंड दैट स्टोरी में मेरा एक थिंग तो मैंने एकदम बहुत जोर से हाइलाइट किया है. जोर से मतलब लिटरली कलर चेंज करके हाइलाइट किंडल में डेंट किया पड़ है. गई. किंडल में What I was डेंट पड़ trying to do was doing this on my the जोर से is again about the fact the way she perceives things around, no? The objects that we talked about this. So they probably had a fight or something, right? And she's thinking about thoughts of leaving will move in, right? एग्जैक्टली सेम चीज खोल के बैठो. मैं पढ़िए राइट. फिर एक वर्ड है जो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकती, जिसका मतलब प्रोबेबली है कि वॉकिंग थ्रू द लिविंग रूम. नहीं, इसका मतलब मैं बताता हूँ. इसका मतलब है a temporary camp without tents or cover. Right. By walk through the living room. Yeah. They will have the living room की बात हो रही है. They will have eyes like rodents and peer out at you from under the sofa. In the dark, from under the sink. Luminous glass beads positioned in twos. पूरा कमरा है. Now, the houseplants will appear to have chosen sides. Some will thrust stems at you like angry limbs. The others kind of will simply sag. मतलब वो plants को भी बोल रही है कि they've taken sides in your thing, right? जज करेंगे. Yeah. Amazing this is, na? It's like getting a she's map of observing your the living plants and room. she's literally saying कि हाँ, you are on my side. तू मुझसे गुस्सा हो. You are on my And side. to be honest, मैंने भी वही देखना शुरू कर दिया. Do plants really do this? And this is very real in this context ना, कि she is thinking of leaving him. तो अब plants तो उन्होंने इकट्ठे वो किए होंगे. अब वो कह रहे हो कि जब मैं जाऊंगी तो plants भी जज करेंगे कि छोड़ के चली गई, क्या बेवफा औरत थी. ये है ना. बेवफा. Yeah. Yeah.
I also like that saying where she's talking about he is living rooms and turkey and mantles and wicks, a nip Right. at the collarbone, and you do a slow syrup sink into those arms like hearth into those living rooms. I was just thinking कि मतलब ये mundane pencil pen wicks की Hmm. गोली सब चीज what she can make out of it. Vicks की गोली लोग खिंच Yeah, खिंच another thing that I had highlighted is this part, कि nightmares have seasons like hurricanes. Be prepared. You'll dream that someone with a violent case is trailing you through the city. Little children come at you with grins and grenades. You may bolt awake with a spasm, reaching for him, and find he is not there. But lost in his own sleep, again a very big word, somnambulum, is roaming through the apartment like an old man, Just for the babbling record, that's gibberish. exactly the right pronunciation. Yeah. Yeah. Bumping into tables and lamps, a blanket he has torn from the bed wrapped clumsily around him, toga style. Get up, go to him, touch him. At first, he will look at you, wide-eyed and not see. Put your arms around his waist. He will wake and gasp and cry into your hair. In a minute, he will know where he is. Again, describing like dreams are always very hard to describe, na? And in her state, she is describing कि ऐसे भी सपने आते हैं भाई. तो yeah, कि वही है कि sometimes you and this is I think common theme कि sometimes her writing is very silly कि she is experimenting with the set and बीच बीच में she will drop these ऐसे things that you take a minute to understand कि You go मतलब back again. You've read what is the like 5 metaphor. lines before and then go back again. Yeah. अच्छा. कि इसमें इसमें because you know कि इसमें कुछ तो छुपा हुआ है meaning and you have to हाँ, read it again and it there is is a something clue. it's not as straightforward as it seems, so yeah. True, true. But I mean, इसमें भी I was feeling कि that we always have that. I mean, किसी को छोड़ के जाने से पहले we have these thoughts, right? I mean, I mean how if you are a will nice you person really तो leave a sick man? And I say if somebody does so, we kind of jump into conclusions. We start judging. I mean, this is such a form of like, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी कि why do we always take sides in our life? Why do we always like have to pick one? Can't we like very shift the perspective? All the scriptures have told us to. There are two हाँ धर्म and अधर्म. हाँ, I correct. mean, इस वो basic है. इसमें प्रॉब्ली याद नहीं आना चाहिए था बट इसमें ना एक रौनक रजानी जो यूट्यूबर है आई मीन कॉमेडियन है उनकी एक एपिसोड रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन याद आता है मुझे आई मीन द डिस्कशन पॉइंट तो उसमें क्या होता है दिस ऑब्वियसली पीपल राइट टू हिम विद देयर लव प्रॉब्लम्स ना तो उसमें होता है कि देयर इज दिस वुमन हु कंप्लेन्स कि मेरा बॉयफ्रेंड है एंड हैज वेरी पेक्यूलियर हैबिट्स एंड तो अभी उसका करंटली जो प्रॉब्लम चल रही मतलब एट एट डिफरेंट एंड शी इज थिंकिंग ऑफ लीविंग हिम है ना तो दैट्स व्हाई आई कुड रिलेटेड विद दिस तो कि एट डिफरेंट टाइम्स ही इज डिफरेंट तो कभी एंड आई डोंट रिमेम्बर ऑल द डिटेल्स बट करंटली उसका जो प्रॉब्लम है कि ऐसे ना हम व्हाट ही मेक्स गार्गलिंग नॉइसेस रैंडमली तो मतलब कि शी गेट्स एम्बैरेस्ड इन पब्लिक एंड ऑल तो आई थिंक एंड आई कैन बी आई एम हेजी ऑन डिटेल्स बट समथिंग इट वाज समथिंग सिमिलर तो शी प्रॉब्ली लीव्स हिम और समथिंग एंड बाद में वो बॉयफ्रेंड उसे भेजता है अपनी मेडिकल रिपोर्ट कि दैट इज एक्चुअली अब उसको कोई मेडिकल कंडीशन को थ्रोट प्रॉब्लम है एंड नाउ शी इज कंटेम्पलेटिंग कि मैंने लाइक डिड आई लीव हिम बिकॉज ही हैड अ मेडिकल कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम हाउ कैन आई बी हाउ शुड आई अपोलोजाइज तो वो उसका ऐसा ही ना कि पूरा मन था उसका जाने का बट देन ही डेवलप्स द कंडीशन नाउ थिंग्स आर हार्ड ही शी स्टिल वांट्स टू लीव हिम बट हाउ शुड शी है ना कि ऐसे बीमार बंदे को कैसे छोड़ के जाए तो या hmm. Like you said, if you are a nice person, you think so much. हाँ दे Told you विल थिंक हाँ वरना अरे ऐसे देख अपना भाई हाँ मतलब एक मिनट के लिए तो बुरा लगेगा हम लोगों को कि नहीं यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए था बट देन वी स्टार्ट थिंकिंग भैया व्हाई आई मीन क्योंकि हम जब खुद को कटघरे में खड़ा करते भी हैं तो बहुत जल्दी बाइज्जत बरी भी करते हैं खुद को बहुत जल्दी बहुत जल्दी. हमारा नाइस हम अपने बॉडी सब यू सब शुड चीजों को कंसीडर जस्टिफाई कर राइटिंग लेते हैं हाँ? So क्या? यू this शुड thing कंसीडर राइटिंग
Yeah, There's this consider Yeah, तो yeah. बहुत बार किया, but वो laziness. लिख ही लो, बहुत हो गया. Consider, I take back my consideration. दिलजीत को तो करना ही bit चाहिए. about दिलजीत जो तो बोल रहे क्या हो. पैराग्राफ लिखते हैं भाई. Correct. उफ. नहीं. There's this bit about जो आप बोल रहे हो ना दिलजीत कि वो छोड़े कैसे. हाँ, So when she हाँ. ultimately tells him कि she's leaving, right? One night you Hmm. finally tell him, Hmm. blah 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 blah. He will look panicked, but not surprised, right? No, because he sees it coming also. Right. Yeah. So do not attempt to bandy words. That's Tell him you do not love him anymore. It will make him cry. Revolts wending their way into ears. Love सब कुछ ये है. He will say something like, well, you lose some, you lose some. You are supposed to laugh, exhale, blow your nose, जैसे मैं look हंसा. polite, You're supposed to have a laugh. sense of humor. He will whisper it into the black. Have a heart. मतलब वो इरिटेट हो रही है वहां पर उसके वाहियात जोक्स पर, बट इज लाइक हैव अ हार्ट, ब्रीथ, एक्सेल, चिल. And this is another common theme कि she also tells कि कैसे react कर, मतलब ये सब खुद को ही लिख रही है ना, तो हाँ, have a laugh here, ऐसे react कर, ऐसे साय कर, ऐसे इस समय ये joke मार, इसमें ये कह. So that is again a very different style of writing. At least मैंने कम पढ़ा है, कम बहुत क्या शायद मजा आया पहली बार ही मुझे पढ़ा है इस करके. तरीके इट का. वाज लाइक कि Yeah. डू दिस दैट. Hmm. नंदिनी, देवल, एनी थॉट्स? Yeah, this one was I was on the girl side because I could somewhere relate. Okay. She अरे, we was are all on very girl side only They're all throughout. on the window. Throughout. क्योंकि men are on men's side ना बहुत सारे. no, I mean just give me 1 minute, huh? Sorry. Yep. विश्वेश भी आ गए. Yep. नंदिनी, हेलो ये हेलो. जो दूसरा बड़ी वाली दिलजीत है है, कुछ ये थॉट्स? सुमित है बाय द वे. तुमने नहीं, मैं ही टेक हूँ. है. नहीं, मैं ही हूँ. सच में? तो पेन है, पेन अब एप्पल पेन. हाँ वो आया था बीच में, आई थिंक फिर चला गया. हाँ, फिर चला गया. वो सुमित चले का गए. तो वो इवेंट है ना. आप हाँ, लोग अभी गए नहीं पगडंडी? अरे. ये गद्दार दोस्त है ये. और दे चोज यू ओवर सुमित. बताऊंगा सुमित को मैं. करेक्ट. ये वाला ठीक है. सुमित को तो कर सकते हैं गुस्सा. ये वाला ठीक है. मैंने बस एक पहले 3 स्टोरीज पढ़ी गाइस, सो सॉरी. अच्छा, खाता सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स नंदी. नहीं ठीक. मैं एक्चुअली आई वाज ऑन अ कॉल, सो आई डिडंट हियर एनीथिंग. नहीं, that's okay, that's okay. जस्ट केम बट बैक. आगे भी ये सुने देखो, सुनोगे आप. अभी ये देवल देखो. वापस आके भी बॉम्ब I'm back, डालेंगे. I'm back. इनको पता है, बट इनको ये जो हाँ सेवर जी. करने टाइप है कि इतने, हाँ हाँ मतलब तुम हाँ जब हाँ. मन करे एक स्टोरी पढ़ लो एंड इट्स जस्ट लीव द थॉट, ये बात तो सही बोली. रीड इट अगेन एंड जस्ट लीव, लेट इट ब्रू इन योर माइंड, राइट? चल रही है पीछे. और लास्ट वाली स्टोरी तो इतनी मजेदार हुई. आई वाज रीडिंग इट ऑन द ट्रेन एंड मैंने अब मेरा स्टॉप भी चला गया. I had finished reading in ये like 2 stops ये down. तो And I was like somewhere else only. ये dangerous है बहुत. बहुत ये तो आपके रिव्यू में जाना चाहिए. हाँ. बुद्धि खो गई भाई मेरी. कौन सी लिखना भी story हिंदी में थी इसका वो? रिव्यू. अरे लास्ट लास्ट वाली. ऐसा नहीं कि I was thinking about the last story. मैंने ना ऐसे बुक बंद की and I started looking at the trees passing when the train runs and मैं ना उसी thought में ही चली गई and I lost. ट्रेन निकल के चली गई. 2 स्टॉप हो गया. फिर मैं realized this is the last stop. You have to on. This is you disembark or something like this came on and I was like last stop क्यों है? Such embarrassing. मतलब मैं बोला ये हुड्डा सिटी सेंटर पे पहुंच के याद आ रहा है. अब कहाँ जाए भाई. अब तो एंड पे आ गए. the train terminates here. Yes, that is how I woke up from my haze. Anyways, coming back. Go, Deval, you had to say something about how. No, I was just not much. Matlab, it's just that it was very relatable from a woman's perspective about being in a relationship and trying to get out. So thoda sa zyada, because you think about so many things. Yeah.
True, right? एकलव्य का मैसेज anything? पढ़िए पीयू, आपको थैंक यू बोला उन्होंने। पढ़ लिया। पढ़ लिया, हाँ। He ये said, रिकॉर्डिंग के लिए बोल दिया करो ना आप, फिर उनका भी वो आ जाएगा। अच्छा, ओ मैं उसी मोड में हुई नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है। एकलव्य, थैंक यू यार, आई लाइक स्टार्टेड सेइंग दैट आई वाज ऑन द फेंस, बट लेट्स हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन इट कभी, चिट चैट पे बात करते हैं। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक द बुक। फिलोसफी के लिए तो हम हमेशा है, मतलब हम नहीं, आई गैदर फिलोसफी फ्रॉम द ग्रुप इज वेल। चलो, डन। अभी आगे बढ़े या यहाँ पे और कुछ कहीं अटकना है हमें? "Hey, चलो अगेन वेरी शॉर्ट वन, बट या नेक्स्ट स्टोरी कौन सी है? अरे गो लाइक मैच दिस, है, देखो ऐश की तो ये एकदम बाद हड़बड़ी वाली लग कौन रही सी है। है? गो नेक्स्ट लाइक वाली, दिस, गो लाइक ओ भाई, दिस। गो लाइक yes, दिस इज ओ वन ऑफ माय माय very गॉड, intense, very intense. वेरी इंटेंस। देवल, यू रिमेम्बर मैंने एक बार एक पोस्ट डाला था कचड़ा वाले ग्रुप में अबाउट a couple who decided to end their lives, and then we Yes. had a discussion, you, me, Mano, we went on that tangent of kya sahi hai galat hai and all of that. I mean, I straight away went to this discussion. I also scrolled down and read what we were talking about in our chat. So this, I mean, how do you take this? I mean, ठीक है, we all are like कि हाँ सही है, it should happen, but when it happens to your friend maybe, जब तो Yeah, अपने भी somebody you लोग care हैं, about. Yeah. yeah, Yeah, how will you take this? Will you leave the house like their friends did, or but was it just me, or this story, which again probably the darkest, was supposedly the funniest also? या मेरे को ही ऐसे इसमें ह्यूमर दिखा कि मतलब उसका ह्यूमर मीटर इसमें कुछ ज्यादा ही हाई है, I probably would because say क्योंकि something सेल्फ else, but I will डिप्रिशिएटिंग only say that जोक्स। सिर्फ आपको देखा। ओके, नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं बस आपकी ले रही। I so badly नहीं, नहीं? बट इसमें जैसे फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव, हाँ 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 ठीक कर रही है ये, मतलब कि उसने, इट फेल्ट टू मी कि ह्यूमर मीटर एकदम से ऊपर ले sarcasm गई वो भी इसमें कि है। काफी जोक्स मारे Yeah, हैं। sarcastic या है actually बहुत, and you know the way she says कि they left the dinner and they went off. Yeah. It's The like, I was first like, thing, huh, I would also probably do that. Left the dinner, maybe stand outside and think a little bit, but I would also kind of मुझे सबसे maybe पहले come तो उसका again. हस्बैंड का कैरेक्टर बड़ा वियर्ड लगा। I could not understand what was he, because so ही there वाज are two, प्रोबब्ली टायर्ड ऑफ हर एंड कि हाँ कर ले it जो seemed करना like, है, ऐसा it मुझे seemed तो ऐसा like that लगा। he had given up. या मुझे ऐसा लगा कि husband felt that he has no say in this matter, and And he there gave is, up. yeah, and there is मतलब, another friend who's the only person who's trying to say ki fight, right? If I'm not wrong. but that is also I think from a religious perspective only ना कि नहीं ये तो पाप कर रही है, आई थिंक कुछ नहीं ऐसा नहीं नहीं था नहीं, कि I don't ऐसे think मतलब that, क्योंकि नहीं, I don't think that is a thing. It is more हाँ about ओके, not yet, केयरिंग, a bit more, or at least कि, or more than if you go you will be missed. मैंने हस्बैंड का ये भी नहीं देखा कि हस्बैंड का भी ये हाँ कॉन्वर्सेशन, ना ना उसने because बिल्कुल एफर्ट नहीं डाला, उसने there was नहीं not even a रोकने की कोशिश करी। conversation around it from the husband. हम्म वो उसने कहीं I think there is something, a line in the book that एक बार हुआ but never a proper conversation, bits and pieces में इधर उधर कुछ हो रहा है, but yeah, I think I think he just felt कि I have nothing to say here. If my partner has decided to take this decision of like kind of abandoning me, then what else do I have to say? I mean, I don't think it felt that way to me. To me, it felt that he had already given up on her. जब वो बोले रहे कि he never made love to her for a longest time, हम्म ठीक है ना? वो हम्म काफी indifferent but हो रहा था, and he's trying to take care of her like a sick yeah, person and not be with her as a partner but कि भाई let's talk about, हाँ, that was my kind of thing कि मेरे को एक sense of abandonment थोड़ा सा feel हाँ हो रहा था हाँ, from her husband actually. and it's not But about, I also thought, yeah.
It's not about not respecting the decision. It was Hmm. more about there was no conversation where the husband is trying to understand her decision. एक होता है ना कि I respect your decision, but I want to understand what led you, like why, or some conversation. कुछ Why conversation. this choice? I mean, कोई such an important relationship in your life. Will you just let that person go हाँ, without asking these fundamental questions? right. Is also something that I thought. I mean, maybe whatever he might be going through or whatever he might have had in his mind, but this is death, right? I mean, the ultimate decision that you can take. Uh, will you let that happen? I mean, Without a करने देना नहीं, conversation. Do देना we, नहीं. the story really straight away starts from here. Now, do we get into headspace ki why she is making this decision? Do we ever get that part? Nahi na. Matlab, it straight away starts with that she has made that decision. Illness के वजह से ही that she did not want to suffer, I think. हाँ, That वो is सब तो not, है that is not the replaced. dignity वाला part ना कि instead of वही being a sick person for a long time, why not just again वो euthanasia वाला जो रहता है angle. Yeah. इसमें But एक चीज जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगी and again I should not keep saying it, but सबसे ज्यादा कलरफुल स्टोरी लगी कि he describes her friends in vivid details कि उसके फ्रेंड्स कैसे कैसे मतलब तीन चार फ्रेंड का उसने बोला जैसे there was again I'm mispronouncing but Merna she talks about and then she talks about Shannon ऐसे दो तीन फ्रेंड क्योंकि वो ग्रुप आता है ना पूरा एक उसका तो शी इज डिस्क्राइबिंग ऑल द फ्रेंड्स इन काफी डिटेल्स कि ये ऐसी है ये ऐसी मेरी फ्रेंड है तो पहले किसी को इतना डिस्क्राइब नहीं किया था बट या इसमें शी डिस्क्राइब्स हर फ्रेंड्स विद काफी डिटेल्स true. But this was a very, I mean, I was kind of thinking, I took it on myself and I started thinking कि सही में अगर ऐसा मेरे साथ होता है, what will I do? You know, I mean, एक तो taking a decision of taking your life is a difficult thing, but what if it happens to somebody close to me? What if somebody comes up and tells me that I'm going to do this? आई थिंक इस ऐसे किस्म अगेन दिस मतलब सबका अलग अलग इस पे ओपिनियन होगा बट ऐसा कोई भी सिचुएशन है इट विल ऑलवेज बी इजी टू मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ रेदर देन एक्सेप्ट जैसे लेट्स से समवन क्लोज टू मी कम्स एंड टेल्स मी कि ऐसा आई एम ट्राइंग आई विल डू दिस तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्टॉप देम अगेन दे विल हैव लॉजिक दे विल हैव देयर रीजंस बट आई डोंट थिंक इतनी जल्दी से हम मान जाएंगे whereas if I had to make that decision for myself it will be pretty straightforward हाँ, conversation with myself कि बहुत इजी रहेगा खुद को कन्विंस करना बट किसी और के लिए ये कन्विंस होना कि टू लेट देम डू दैट विल बी प्रोबेबली अ मच मोर डिफिकल्ट थिंग टू डू Even reaching that decision that you are ready for it, it's not an easy decision easy because you decision, will yeah. somewhere have to communicate this to the people around you. Yeah, yeah. It is not committing suicide, no? It is like No, it's not. Yeah. It's not a committing selfish suicide in a decision, although it is a selfish decision in a way, but yeah, still that this is the right decision and you are ready for it. That is not an easy conversation to have with anyone. Yeah, and in a way, I think having this conversation is also seeking some sort of validation, saying kahin na kahin, taking this कोई रोके decision by yourself is so difficult to take your own life. And you know, when we think of it, ठीक है अभी हम पढ़ रहे हैं, but when we come to that, think of people who like drowned in the Titanic wala thing. They have seen their lives go in front of themselves. अब हम बहुत सोचते हैं यार हाँ सुइसाइड कर लेंगे और ये कर लेंगे, but when it really comes to happen, you see this in the story also when you know she talks about you know her life fleeting away in front of her, and you know then it was Thursday and all that when she says. So I think when it really happens, एक second thought तो जरूर आता है सबके दिमाग में, and then you know battling that out plus battling the people around you. I mean, I don't know which is a tougher battle. Exactly, and that could be the loneliest moment of your life. ट्रू ट्रू Yeah. ऐसे they will be truth अरे bombs. हेलो हेलो सुनाई नहीं देता. Hello everyone. Hello नहीं everyone. Hello, Barsa fan. हो गया
Yep. There's a recording going on. Okay. Wait, what? So what? He love his voice. Oh, I think. वो बोल के गया इट्स अ यूट्यूब चैनल आई थिंक वो भी बीच में बस अटेंशन चाहिए था उसको चलो कैरी ऑन ठीक है फिर एनीथिंग एल्स ऑन दिस ऐश नहीं, बस दिल को छू गई है. Ash wanted to read something, no? Ash. नहीं मैं ढूंढ रही थी कि इसमें क्या बोलते हैं कुछ एनीथिंग एल्स दैट आई जोर से हाईलाइटेड I highlighted something when that I was actually reading out right now. It is already July. The fireflies will soon be out. My death flashes across my afternoon like a nun in white, hurrying, evanescing, apprehensive, Navsara words, as the rise of the heat of boulevards, the parched white of sails across cement, around the corner, fleeing the sun. I have not yet seen the face. It is hooded, perhaps wrapped, but I know the flow. The cloth of her moving always in diagonals, in waves toward me, then footlessly away again. I think she's describing death. यहाँ पे I think so. इसमें एक और है जो मैंने हाईलाइट किया था वो on the day that she decides to, and again I don't know the significance of this day, but I've decided on Bastille Day. It is a choice of symbol and expedience. Expedience. Elliot will have time enough before he begins teaching again in the fall. Blaine will not go to camp this year and can spend some time with Elliot's folks upstate. As it will be unbearably hot, I'm sure I will tell everyone to wear light clothes. No black, no ties, no hats, no coats. The dead are cruel to inflict that misery in July. अगेन तो मतलब किस किस एंगल पे वो सोच रही है कि अच्छा मैं इस टाइम पे जाऊंगी तो किस सबसे कम इनकन्वीनियंस होगी बाकी लोगों को दैट आर अराउंड मी, कि पति फिर उसको इनफ मॉर्निंग टाइम मिल जाएगा और फिर वो पढ़ाने अपना फॉल के सेशन में स्टार्ट कर सकता है, विल नॉट हैव टू मोप अराउंड और टेक लीव्स, या और बच्चे का भी कि हाँ इतना टाइम वो अपने दादी दादा के साथ रह लेगा. And again, the kind of things that you think, the kind of things you think when I'll again. tell you a very dark story here, right? I mean, I know of someone who took their life, like committed suicide. Huh? And that woman, before dying, before taking her life, she actually cooked for the family. She actually made sure that the house was in order. And then went and took her life. Imagining कि वो चली गई तो लोग बैठ के खाना खाएंगे आराम से. I mean, things that you think of and I mean, do when you are in that state. I don't know. I mean, this is something also that came across my head. That ये जो feeling है ना, you almost never, and again her situation is coming from कि she doesn't want to be a sick person who needs to be taken care of, but even when you are gone, you never want to be a burden. मतलब कि you never want that inconvenience on anyone. कि अच्छा फ्यूनरल भी होगा तो डार्क कपड़े ना पहन के आए, गर्मी होगी, आई विल टेल एवरीवन टू वेयर लाइट क्लोथ्स. मतलब क्या फर्क पड़ता है उसमें, कोई तू तो है नहीं तो कोई क्या क्या पहने क्या नहीं पहने, है ना. बट आई थिंक एज अ ह्यूमन हम अल्टीमेटली ये लीस्ट ऑफ, ऑल्दो दिस शुड बी द लीस्ट ऑफ वरीज, बट वी हार्डली वांट टू cause inconvenience Inconvenience to people. people around us. And I think it, at least जो मेरा thinking है, it always comes from कि जाते जाते भी कोई हेट ना करे मुझे कि क्या ये किस समय मर गई, ये ऐसा हुआ, मुझे अब स्कूल का भी देखना है. मतलब वो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड बाय एवरीवन, कि वो एंड तक रहती है कि भी जाते जाते भी किसी को इनकन्वीनियंस नहीं करना है. Right. Yeah. For some reason, after reading this story, it left me with a feeling that I'm not convinced that she was ready to die. She had that conviction in her mind that she wanted to die. She would go this way because they had all, I think it's alluded in the book that this was a conversation she had before she had even gotten sick. मतलब ये पहले से कभी conversation था and it was an agreement and she was a very pro euthanasia kind of a person, right? And so it was very obvious, but for some reason it always felt that वो discussion जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, and she also knows it कि नहीं हुआ है.
वो काफी He बार maybe वो thought करती कि somebody will stop me from doing this. because Stop she's me, written there stop a me. few times that it is summer, not in summer, there are something, not yet. कुछ कुछ है इसके discussion, something around that. I can't remember. यही तो था the So when that I kind read the of passage, that is also that only. वो एक हाँ, चीज थी जो that अंडरलाइन मुझे लगा इन लोगों ने कि not enough discussion and till now I think I'm still pissed at the husband, so that's another thing, but it's okay. Husband and friends also, like everyone was so, हाँ तूने कुछ सोच के किया होगा, तो you एक लाइन तो कुछ की, you must have thought this out and you've already made decision. मतलब everyone, although we want our friends to be supportive, but probably not in this case ना. तो It's okay. कि there must have been some. Supportive, but at least have that conversation. हाँ, at हाँ least have that conversation ना कि क्यों क्या nobody It's kind okay. of Nobody's saying कि fight it, but क्योंकि हाँ, हाँ इसमें they are conversation very much accommodating कि हाँ कर ले. nobody tried हाँ. to kind of because when you have that conversation, the person thinks, ठीक है ना, तुम वो put it into words, you think about your own decision when you're having that conversation. वरना तो तुम अपना अकेले ही खुद, जैसे वो बोल रहे थे ना कि अभी निखिल बोल रहे थे, हम खुद ही को एब्जॉल्व कर देते हैं, हम खुद ही को दिमाग में कॉन्वर्सेशन चल रही अपने है, बट when you're having yeah. that conversation with another person, तुम उसको अलग अलग एंगल से सोचते हो, तो यू आर जस्ट हेल्पिंग इट आउट. मैं नहीं बोली कि तुम जाके झगड़ा करो उससे, बट एनीवे, सो आई रियली लाइक, मतलब काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये. मेरी फेवरेट यही वाली थी. नाइस. आई थिंक नेक्स्ट, मुझे तो पता नहीं, मेरी कोई फेवरेट तो मुझे बहुत सारी बहुत अच्छी लगी हैं. मेरा माउस इधर हाँ. अब तो मैं एक्चुअली वही हाँ ये सोच रही हूँ कि देवल मैं है. किसको मैं फेवरेट बोलूं. अच्छा, एक क्वेश्चन है. इस स्टोरी में, since I haven't read it, इस स्टोरी में does the husband leave the wife or नो, No, either no. way? नहीं नहीं नहीं. Okay, इट cool, cool. ऑलमोस्ट एंड तो नहीं shows दिखाया that है. he's happy that she's taken the decision and she's going हाँ to वही वही मैं कह रहा था ना कि he relieved, is not very happy, welcoming of the thought. He is he's very welcoming. relieved हाँ kind अच्छा of. कर रहे हैं, कर ले. मतलब हाँ, कहीं से भी हमारा प्रॉब्लम कोई वही है. रेजिस्टेंस नहीं है, कोई But रेजिस्टेंस. why? What is the reason given in terms of why the husband is not stopping her? कुछ नहीं है, कोई रीजन हस्बैंड का नहीं है, पर्सपेक्टिव का कोई कुछ है ही रीजन. That नहीं. is the problem. हस्बैंड इज लाइक, पीओवी आई इज नो ओनली दैट द. शी टुक अ डिसीजन एंड हमने, मतलब हम लोगों ने काफी, सो दिस फैमिली इज वेरी प्रो यूथनेशिया, ठीक है, सो दे, Yeah, that I heard. हाँ, But still, you love एग्जैक्टली माय somebody. क्वेश्चन, कुछ नहीं है Exactly. So, उसमें, That is my problem. कुछ so I'm just trying कॉन्वर्सेशन to नहीं. understand if I missed something. नहीं, यू नॉट, दैट इज द Oh, पॉइंट, वही तो मैं बोल रही हूँ कि देयर इज that's the समथिंग. point. That is बट अगेन You हमें ये know भी what? सोचना चाहिए Sorry. कि. Hmm. हाँ हाँ बोलिए बोलिए नंदिनी बोलिए. No, then I think that ये वही निर्दयी इंसान है जिसने जिसने कि अपनी मतलब आई एम रिमेम्बरिंग द फर्स्ट स्टोरी कि दिस इज प्रोबेबली पेट्रिशिया. you know is where he's like हाँ छोड़ दे, मेरी तो वैसे भी यहाँ दो रखी है साइड में, see एक के see साथ see मैं there are handle. themes, there are themes. दिलजीत, ये वही आदमी है, ये वही कमीना है, मैं बता रही हूँ. साहेब बीवी और दूसरी बीवी. दूसरी भी. तो दिलजीत And in की this case थियरी इज तीसरी. द, दिलजीत ने ये सही बुक पढ़ी है, हम सब ने गलत पढ़ी है, रीजन ये है मेरा. नहीं बट अगेन इसमें वी आल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि दिस इज दिस लेडीज पर्सपेक्टिव और पीओवी ना. तो हम दूसरों की माइंड स्पेस में भी नहीं गए, हम जो वो प्रेजेंट कर रही है हम वो हाँ, देख रहे हैं ना. exactly. तो मे बी हस्बैंड इंटरनलाइज कर रहा है कुछ. एंड That's what I am also thinking. हाँ. हाँ या फ्रेंड्स की आपस प्रॉब्लम में नहीं, कुछ तुम विदाउट हर. इंटरनलाइज मत करो, तुम बात करो. नहीं नहीं हाँ बट वही कि पीओवी कैरेक्टर है ना, तो हम उन दूसरों का हमें नहीं पता, तो अभी हम वी आर जस्ट गोइंग बाय व्हाट शी हैज प्रेजेंटेड टू अस कि किसी ने उसको आके ऐसे. शी नेवर इवन से शी इज नॉट डिसअपॉइंटेड विद दैट. हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि कैसे किसी She ने is, कि कुछ ऐसे नहीं किसी ने बोला. रोका हाँ. नहीं है. she is बहुत सटली उसने लिखा है, बट मैं ढूंढती हूँ, एक सेकेंड. या मैं वो पार्ट भूल गया हूँ बट हाँ मुझे.
और इसमें अच्छा, इसमें देर इज अ प्लॉट विद इन अ प्लॉट अबाउट हर राइटिंग अ चिल्ड्रंस बुक्स आल्सो ना, वो विलियम विलियम Okay. व्हेन हाँ हाँ विलियम हाँ कम्स हाँ इनटू इट, हाँ राइट तो राइट I यस found this वो piece, भी है। and I think ये Nandini तुम्हारा question भी it'll kind of address. So I returned lotion. I never hear him. Okay. पढ़िए जरा, मुझे भी याद हाँ नहीं आ मैं रहा वही अभी बोल तो रही हूँ. शी। It's like a rude poem of stupidity of the space grown between us. I returned to this. कहाँ है मैं? So she's just told him कि she's decided that she's going to take her life. So his reaction is this. He looked a little white, standing there by the oven. He took my hand, kissed it, held it between his, patted it. Let's think about it for a day or two, or whatever. Then we'll discuss it further. And I repeated, then we'll discuss it further. Yes, he said. Yes, I said. But we didn't. हम्म Not really. हम्म Oh, it did drift piecemeal into subsequent dialogues, like a body tossed out to sea and washed back late day later into the shore. A shoe हम्म here, a finger there, a breastbone in weed, but we never truly discussed it. Never truly. हाँ now I remember this thanks Ash हम्म ये now this also brings into perspective a lot of things right that she was longing to be questioned हम्म। about it longing to be you know तो मे बी देयर वाज brought back into senses in a that way conversation that she expected but never happened, हम्म neither with her husband and nor with her friends even, कि क्योंकि friends were also हाँ ठीक है, तू ठीक ही है जो कर रही है। ये stayed with Oh, me. कि ये and from the number of friends that she has mentioned, again I'm thinking कि she was expecting कि कोई तो मतलब she has mentioned ऐसे I think 6 different friends जो जो जिनको वो एड्रेस करती है कि हाँ ये there's Shannon, there's Joni, there's some other one, तो maybe she was expecting कि कोई एक बंदा तो मुझे टोके या या हाँ मुझसे बात करे इस बारे में। Yeah. all right. Okay. you're right ये था इसका. अभी चलो let's move on quickly हाँ काफी देर हो गई है. हाँ काफी देर से हम एक एक स्टोरी पे we have been hooked और there's मजा आ so रही है. much to talk about हाँ there's so much to talk about Like and every कितने Yeah, story. जैसे मैंने angles शुरू में बोला, या मैं शुरू में बताया ना कि दिस आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज़ अगेन ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग हाफ ऑफ द स्टोरीज दैट जो मुझे थोड़ा हाँ डाउट था, मेरे को भी. एंड देन गेटिंग एवरीवनस थॉट्स ऑन दिस इज इट्स yeah वेरी इंटरेस्टिंग बुक I टू also started डिस्कस। reading about the ये author फिर. ठीक है ना. And that is also very interesting. Uh, ये विश्वेश भाई, आप प्लीज yeah ये लिंक ग्रुप ग्रुप में भी डालोगे, ये जो आपने इंटरव्यू वाला डाला, सो दैट वी कैन लेटर ये चेक इट, जो इंटरव्यू वाला आपने डाला I've प्लीज उसमें opened the ग्रुप में भी link डाल दे। and I think I've read ओके। this interview. I went on a rabbit hole of reading her interviews and listening to her हाँ. YouTube things. But yeah, she's amazing. I mean, if you hear one of her interviews, you will understand ki whatever she's writing, she's also thinking like that. I mean, she has a strange air about her. अच्छा, नाउ Okay, कम्स द मोस्ट how to talk about your टाइम mother? टाइम Talk to ट्रेवल your वाली How बुक, to talk to your mother. हाउ टाइम ट्रेवल वाली बुक which goes year by year and year by year. उल्टा year by Yeah, year. उल्टा year Reverse रिवर्स। chronology. This is जब when I will have time I will start from first year and come back to this कि कैसा फील होता है स्टोरी शुरू से पढ़ने में। यहाँ तो हम एंड से पढ़ रहे हैं ना, तो Hmm. ये तो क्या ही एंड बोलेंगे. इसमें भी पर्सपेक्टिव अगेन, इसमें भी इज इट मेड क्लियर दैट दिस इज अ डॉटर टॉकिंग टू हर मदर, या इज इट अगेन वी डोंट नो वो नहीं I नहीं, वो this felt is चाइल्ड को। like a daughter. daughter की डायरी टाइप है ना. ऐसा हाँ कुछ ये है. डॉटर ही है हाँ और इसमें भी मैंने बिकॉज जोर आई से थिंक जो शी अंडरलाइन किया है ना, वो समटाइम. हाँ तो यहाँ पे शी राइट शी रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट हर हाँ. मदर हैज टॉट हर एंड ऑल हम्म So this is, I think, the main character is the mother is unwell by the end, right? So it is हम्म her and her mother के interactions इधर and उधर. And this is after the या mother becomes sick and she comes to live with the daughter, right? हम्म And she's got some heart disease initially, and
the mother is living with her and usne ek diary entry or what entry is, do not resent her. Think about the situation. Mhm. For instance, Hmm. when you take the last trash bag from its box, you must throw away the box by putting it into the very trash bag. Very obvious, है ना? What Yeah. once contained now must contain. The container then becomes the contained, the enveloped. मैं ये लाइन पे पूरी Mhm. तरीके से अटक गई थी कि मतलब the mother is containing the daughter at some point. Now the mother has come to live with her. It is like she's become dependent on the daughter and उफ, फिर मैं वो पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई. Yeah. And then I read Smoke Deep Marijuana. actually. Containment के बारे में about how a mother contains their child and then becomes, I mean, serves as a container for most of their life, and then the tables are turned and you become content of their container. Yeah. No, I think this entire story is more about the watching your parents grow old theme. Hmm. And Yeah, true. but I think his father passes away काफी साल पहले ना. हाँ. I'm trying to find the year. Easily. I think 19. comes back from war in 45. He passes away in 59. So he passes away in 59. Grandma Moses passes away in 61. And the mother, I think in 80s, 80 or 81. So there's a significant period where only her mother is the only parent and her father has already passed away. So, yeah. Yeah, I think in 1956 there is this line where she says, "Tell your mother about all the books you are reading at college. This will please her." हाँ, वो I काफी एक लाइन के भी ईयर्स के हैं कि हाँ ये I कर ये I've written strange things in this book. I've just highlighted it and said, "Been there, done that." और तो कुछ है नहीं Nice. स्टोरी में ज्यादा आई थिंक. I think this is about talking to your parents. I mean, like you said, seeing your parents grow old and going through. But इसमें बहुत again जैसे फ्रॉम अ फीमेल्स पर्सपेक्टिव थोड़ा और भी ज्यादा वो टचिंग होगा. बट आई फेल्ट वेरी स्वीट जैसे कुछ कुछ चीजें बिकॉज वी डोंट रियली और एटलीस्ट आई नेवर हैव टॉक टू माय मदर ऐसे वन ऑन वन करके कि बस वही बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं बस उतना दिन का ज्यादा कोई ऐसे हालचाल वाली बात भी नहीं होती है. तो दिस स्टोरी प्रॉब्ली क्योंकि शी टॉक्स अबाउट ऐसे वेरी रैंडम थिंग्स ना कि ये बताओ अपनी मम्मी को ये बताओ ये ऐसे. Did एंड you नंदिनी take हमसे notes? डिस्कस इसलिए आपने आपने आइडियाज लिखा लिए टेक क्या? नोट्स. हाँ नहीं आई डेफिनेटली डिड. तो अब जैसे इसमें एंड इसमें एक अगेन वही साइड प्लॉट वाला एंड मे बी दिस इज हर ह्यूमर. मून स्पेस पे वो मून पे इंसान पहुंच गया निक्सन को गोली लग गई है. ये प्रेसिडेंट हार गया ये जीत गया लाइक लाइक ऑल दोज आर नागासाकी ऑल. में some 40,000 people have died. हाँ तो All वो these. हिस्ट्री लेसन्स भी साथ में ही चल रहे हैं एंड जिसकी कोई जरूरत नहीं है. बट आई थिंक दिस इज हर जस्ट क्वर्की वे ऑफ पुटिंग थिंग्स इन कि हाँ ये But भी it हो रहा also puts into perspective at what है. हाँ point in your life yeah what was happening and then. what was happening. Yeah. ऐसे वैसे ऐश वो कंटेनमेंट वाला लाइन मैंने भी काफी जोर से हाईलाइट हाँ वो है खतरनाक लाइन है वो. सुमित आया हाय सुमित. म्यूट आया वो अभी. अनम्यूट नहीं आया. म्यूट आया हाँ, आया like ये अनम्यूट आया नहीं है. म्यूट आया दुरुस्त आया. वाह 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 वाह. नेक्स्ट स्टोरी में याद And it कर is short. क्या था स्मोक उस. अच्छा वैसे स्मोक मैरिजुआना भी है. अच्छा ये किया करा था हाँ 65 में उसने किया ये तो लिखा है उसमें 1965 smoke marijuana try नहीं to तो कब ये किया. figure मुझे out what अगेन has made your life go wrong. हाँ. अब ये भी मुझे फनी लगा कि 70 में यू आर प्रेग्नेंट अगेन ट्राई टू डिसाइड व्हाट यू शुड डू गेट योर हेयर चॉप्ड शॉर्ट एज अ बॉयज. मतलब क्या रिलेशन है इसका प्रेग्नेंट होने से. बट अरे उसका उसका है अच्छा दिलजीत
है See, बताइए क्या है? when you are pregnant and when you are like about to have a child, you will not have the time to breathe, not have the ओके, time to do anything. तो आपको जितना ख्याल रखना हो ना अपना, उससे पहले रख लो, because once the कम child कर has लो. come to this world, everything is about that child. As short as the bus. See, these are the perspectives that are needed. Yeah. हाँ. भाई नेक्स्ट स्टोरी का फिर भी इज आल्सो टाइमलाइन टाइप, राइट? बट उसका पहला लाइन है कमाल. मूवी, But हाँ उसका date wise है, not year wise, no? हाँ सॉरी, डेट वाइज है उसका। तो वही है ना, नवंबर में स्टार्ट होता है और उसमें खत्म हो जाता है 2 महीने। नवंबर दिसंबर ये है, हाँ, 2 अमर महीने. वाला का, हाँ 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 हाँ, मान, उसमें डेट. वो and है. उसका पहली Date लाइन wise. कितनी मस्त है ना, अंडरस्टैंड दैट Cat योर is a कैट इज अ whore and can't help you. ये काफी बिल्ली सेंट्रिक स्टोरी है. एंड आई टू बिल्ली को ड्रैग। जाने दो, नहीं जाने दो, जाने दो, नहीं जाने दो, यही हाँ चलता है पूरी स्टोरी. हाँ. It's अच्छा, a दिस इज very द cat स्टोरी वेयर बॉब parent वाली ना, problem. द थिएटर ग्रुप बॉब। बॉब वाली है. हाँ. हाँ, बॉब बॉब हाँ वाली है. एंड ये एंड यही नॉट बॉब। बॉब वाली. मार्ली. She नहीं. suspects her husband, her partner to cheat on her. हाँ, यही है वो. क्या नाम होता है उसका? सोनिया. सोनिया, सोनिया पे तू सोनिया के साथ बातें करता है ना सोनिया। वही है ना. हाँ. And then वो बंदे के साथ उसको सस्पेक्ट करना था. She also starts thinking that he's probably bisexual. वो जो उसका फ्रेंड रहता है बॉब, थॉमस में, क्या नाम होता बॉब द है? बिल्डर। बॉब. बॉब द बिल्डर. बॉब नहीं. और नहीं, एक जो बॉब तो बस बॉब की तो कॉन्वर्सेशन की ही इज गे है ना, तो बॉब तो एक्सक्लूड कर देते हैं. आई थिंक वो और बॉब के एक साथ तो खुद मूवी देखने जाती है. अरे एक बट और शी होता है, फाउंड हाँ. हिम, बॉब के साथ वो एक मूवी देखने गया था ना बंदा, दोस्त के साथ। बॉब के साथ मूवी देखने नहीं गया. बॉब तो नीचे वाला रहता था ना, नीचे रहता था. नहीं, बॉब के साथ तो वो खुद जाती है ना, आई थिंक. नहीं, उसके शी इज इन द मॉल एंड शी नोटिसेस बॉब एंड मॉस कमिंग आउट। ओ अच्छा. व्हाई डू आई रिमेम्बर हर एंड बॉब गोइंग वो टू अ आफ्टर मूवी? दैट इट हैपेंस, दैट ओके, हैपेंस, बट ओके, दैट इज द सेकंड थिंग। सो ओके. दैट इज व्हेन वो झगड़ा करके चले जाते हैं हम्म. कि उसको छोड़कर। एंड शी फाइनली बट लेट्स इसमें कैट इसमें आउट। इसमें दिस एंड्स थोड़ा ऐसे ना कि शी ऐसे हग्स हर हस्बैंड, और मतलब कि वो आई थिंक वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है ना टुवर्ड्स द एंड. So it is almost like this underlying theme is that she's possessiveness basically. Cat को, husband को, हम्म. सबको possess. She's trying to kind of हम्म. control them, and then husband शक कर रही है. She's being, yeah, हम्म. and then she finally lets But the then cat she comes out, back. and हाँ. kind of gets over it. उसका आर्क कैसा है पूरा. इसमें थोड़ा मुझे हस्बैंड का भी वो लगा, बिकॉज द कैट वाज ओरिजिनली हस्बैंड्स, बट देन ही डेवलप्स एन एलर्जी. तो नहीं नहीं नहीं, it was अब वो Bob's. कैट बेसिकली. Cat was ओ, इट वाज Bob's, बॉब्स. बॉब नेबर का कैट था वो. and he हाँ, developed ओके, और ओके, उसको नेबर देके डेवलप द एलर्जी, तो उसने उसको दे दिया. पार्टनर, नॉट हाँ, हस्बैंड, ओके, शादी का इनकी। ओके, ओके, ओके. मुझे लगा कि हस्बैंड इज जेलस की बिल्ली मेरी थी, बट आई कांट कीप हर, और तू अब इतना प्यार कर रही है बिल्ली से. दैट आल्सो अगेन, ओके, आई वाज रॉन्ग. ये हाउ टू, ठीक है. इसमें और स्टोरी में और कुछ है क्या अदर देन द पोजेसिवनेस थीम? मुझे और कुछ नहीं मिल रहा हाँ, है। वो थीम तो वही, आई थिंक अब नाउ दैट यू मेंशन इट, थीम वही लगा कि शी वाज, हाँ. क्योंकि शी डिडंट वांट टू लेट द कैट आल्सो वेंचर फ्रीली, एंड ऑलवेज केप्ट हर कि नहीं अभी छोटी है, अभी अभी हो जाए. बट देन कैट वापस आ जाती है क्या व्हेन शी नहीं, लेट्स नहीं इट वो आउट? बताया नहीं है। तो बताया शी नहीं वाज था. राइट इन अ वे, आई गेस. तो वो नहीं। छोड़ती बट और फिर कैट को नहीं लेके तो वापस उसका आती. परसेप्शन सही था. आई थिंक सही था. यहाँ पे देर इज ऑल्सो समथिंग दैट आई फेल्ट कि हमको अगर किसी के बारे में कुछ पता चल जाता है, से फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, और अगर थोड़ा सा भी कोई इंक्लिनेशन उस डायरेक्शन में हो ना, वी इमीडिएटली पुट दैट पर्सन हम्म, टू दैट सेम वो बॉक्स. बायस वो हाँ, बायस वो वो हो बायस जाता है. रहता ही है. हाँ. या. So I think possessiveness के अलावा I was also thinking कि that is very evident कि अगर उसको ये नहीं पता होता कि that guy has kind of cheated in the past and all of that, तो I think उसको ये इतनी जल्दी ये फीलिंग नहीं आती. इज दिस द स्टोरी वेयर ही गोज टू, नहीं नहीं ये वो नहीं है ना, कौन सा? where the husband goes to, that is the first story where the husband goes to, not the first story, in one of the stories,
Crap. The husband goes to Scanton. वो तो मुझे ऑफिस यही से है, याद आता था. यही है क्या? आई थिंक यही है। इसमें भी यार वही मुझे होता है बहुत ना, अब stories देखनी रॉस है. कभी कहीं जाता है, कभी थिएटर में जाता है, नहीं, कभी इसमें the ऐसे। husband is faithful. इसमें the husband does not. नहीं, इज फेथफुल, हाँ, There बट is another शी story इज जिसमें है that is. वो थिएटर वाला पर्सन जो कोल्ड हाँ, रहता है. possibly आगे How to वो फिर Become a शुरू Writer. में नहीं नहीं, शुरू वाला ही था, फिर वो शुरू वाला। What is Seized में है क्या? What is Seized क्या? मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ. हाँ शायद व्हाट इज सीज्ड में है वो तो शायद. मुझे नाम याद है स्कैंटन इज मेरा ऑफिस के चक्कर में मुझे द ऑफिस रादर. चलो then let's go to how to become a writer and our writer has come. Sumit, सुमित भाई बताइए, देवल की भी हाउ टू बिकम अ अपेरेंटली राइटर बताइए पहले। फेवरेट स्टोरी है. देवल चली गए. देवल बोली शी will देवर come विल back. बी बैक। सब लोग को डिनर करना है. हाँ ये लेट कब हो से रहा है डिनर मुझे. इतना जरूरी कब से हो गया? पता नहीं. मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है. अब मेरे शाम की चाय की वक्त हो गया है. तो जी महारानी जी। सुबह की चाय लाहौर में. ब्रेकफास्ट क्या था वो? क्योंकि ऐसे ऐसे ना थोड़ी देर में पीयू ऐसे ताली मारेंगी और ऐसे इधर से हाई दो टी का जने समय हो गया. आएंगे। लेट्स बी इधर से दो जने वेरी. आएंगे हिंदी आफ्टरनून के। टी. अरे आफ्टरनून टी. हाई टी. चलो जूलिया. अभी हम राइटर राइटर कुछ बोलेंगे नहीं, राइटर बस सुनेंगे. आई थिंक ही हैजंट प्रॉब्ली रीच्ड होम या कुछ ऐसे, तो अभी नहीं, वो जो मैं कुछ हम बात कमेंट नहीं कर रहे किया हैं ना वो उन्होंने। आगे है. वो लास्ट स्टोरी में है, इसीलिए टू गाड़ी फिल्म वाड़ी में है. चला रहा होगा कान में लगा के. कोई बात नहीं. जो हम बात कर रहे हैं ना स्कैंटन और वो हस्बैंड, वो लास्ट स्टोरी में है. अच्छा अच्छा या अच्छा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टोरी इज हाउ टू बिकम अ राइटर. हाउ टू बिकम अ राइटर कोई मुझे याद दिलाएगा क्या है? अरे वो यार कॉलेज में वो वही फर्स्ट है. प्लॉट राइट पे, वो फर्स्ट राइट बी स्टार्ट प्लॉट with the में, समथिंग. mother. एनीथिंग हाँ, एल्स. starts with the mother saying go क्या unload the dishwasher or something like that, do some work. मतलब वो हाउ अबाउट एम्प्टिंग द डिशवॉशर। how about emptying the dishwasher. या तो बेचारी जाती है अपनी मॉम को पोएम दिखाने के लिए, तो उसकी मम्मी उसको बोल देती है डिशवॉशर. बट इसमें तो इसमें आई थिंक मेरा हो गया था द खत्म. थीम इज कि एवरीवन कीप्स टेलिंग हर कि तू प्लॉट कहाँ है, तेरा प्लॉट कहाँ है स्टोरी में, शी इज थिंकिंग ऑफ वेरी विविड इमेजरी एंड हाँ, ऑल दिस दैट है इज. ना। तो इसमें आई थिंक शी पहले कभी लॉयर बनना होता है, कभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना होता है, बट इवेंचुअली शी she स्टार्ट स्टडिंग accidentally हाँ she या accidentally गलती opts से for creative writing. ओह यार, ब्यूटीफुल goes स्टोरी दिस इज. goes into a writing class and फिर जब क्लास ओवर हो जाती है तब she realizes अच्छा ये क्या चल रहा है, how is this not about, because she thought she was going into a bird watching या कुछ ऐसी class, हाँ हाँ. because that was one of the electives, but eventually it turns out to be a creative writing class, but उसमें भी she's not very successful ना, like all the projects that she's doing, all the short stories she's writing are very, प्लॉट no नहीं है. one likes them and plot driven नहीं है, तो yeah, डार्क होते हैं एकदम और प्लॉट ड्रिवन नहीं होते. Dude, skip हाँ rally lines. someone Na? First, try to be something else. Anything. हाँ. A movie star astronaut, a movie star missionary, a movie star kindergarten teacher, president of the world. President of the world Fail fail miserably. miserably. It is best if you start at an fail at an early age. 14 तक फेल हो जाओ। 14. Early critical disillusionment is necessary so that at 15 you can write long haiku Long sequences. haiku sequences about the thought and desire. क्या मतलब? He is a believer of टूटे दिल से संगीत निकलता है। बिल्कुल. कि फेल हो जाओ Van पहले, Gogh. Van Gogh. फेल हो जाओ पहले, फिर कुछ कर पाओगे एज अ राइटर, तो एटलीस्ट तभी कुछ होगा। सही है ये Why स्टोरी do we लेकिन. care about this character? Have you earned this cliche? These seem to be हाँ, important. ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, अगेन थिंग्स लाइक कॉन्वर्सेशन दैट विल हैपन इन अ राइटिंग क्लास, Yeah. कि अच्छा ये हाँ. हाउ डिड यू रीच दिस कंक्लूजन, ये कितना सही है ना, हैव यू अर्न दिस क्लीशे, अच्छा तूने क्लीशे लिखा है बट हैव योर कैरेक्टर्स अर्नड इट, तो अगेन Also, वेरी वैलिड पॉइंट। मुझे almost लगा this story is kind of, बोलते हैं एक thread, सेल्फ रिफ्लेक्शन। backbone of the entire book. मतलब हाँ. पूरी book में this book is not a plot, like every story is not a very plot, बहुत ही
कोई प्लॉट ड्रिवन स्टोरी है ही And तो the writing style is very different also. हाँ Like experimental, I would say. लिटरली लाइक शीज हाँ, वो अपना लिटरल लिख रही है कि मैं जब राइटिंग बनना चाह रही थी तो क्या हुआ था. हम्म, True, I also felt that. जब you listen to one of her recent interviews for the book she's written recently, हेलो अरे ऑथर आ गए. आइए राइटर साहब, हमारे आइए राइटर राइटर साहब साहब. एकदम सही समय पे आए हो सुमित. We यार are आज सब लोग इतने discussing how शरीफ to तो दिख become रहे a हैं. writer. भाई मैं मैं तो तो इवेंट पे हमेशा गया देखता था. हूँ. फॉर्मल वॉर्मल में निखिल एकदम कैसा है रहा इवेंट इस समय? Event कैसा था? ठीक ही था. अरे इधर पहले ही बोला था यहाँ आ जाओ ज्यादा मजा आएगा, तुम आए नहीं हैं? अरे हमने ऑर्गेनाइज किया था ना, बट ठीक ही था, क्या बोलूं. मैंने यही सबको समझाया कि तुम ही ने ऑर्गेनाइज किया था स्टार्टिंग में, सो यू कुडंट. है ना. हाँ तो हाउ अच्छा टू बिकम बताओ अ राइटर. के बारे में बताओ चलो. हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर करो, हाउ टू बिकम अ राइटर. हाउ टू बी अ राइटर, बिकम अ डोंट. राइटर. एग्जैक्टली यही वो कह रही है, कुछ भी और बन जाओ. ये बुक में मतलब आई you are थिंक मैंने saying सारे छोटे छोटे स्टोरी सारे पढ़ लिए. 3 बड़े स्टोरीज रखे थे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ लिए मैंने, जब अपना फेब एंड भी पढ़ लिए थे. व्हाट इज सीज मैं आई ट्राइड What is लिसनिंग his is ऑन द वे. आज वहां पे एक पगडंडी जाते जाते कि कैसे ऑडियो बुक में होता है कि इट्स आई डोंट थिंक हाँ, मेरे लिए तो इट दिस बुक इज नॉट एन ऑडियो बुक काइंड ऑफ अ बुक. इट इज नॉट yeah. इट इज नॉट. नहीं, मैं सोच रहा था कि अरे क्या सेंटेंसेस है इसके. हाँ आई वांट टू हाईलाइट ऑल ऑफ देम. हाँ एंड ये ऑडियो बुक में छूट रहा है, ऐसा ट्रेन छूटी जा रही है, ऐसा लग रहा है. छूट रहा है 100%. बहुत छूट रहा है. एंड व्हेन आई मतलब वाज एक्चुअली रीडिंग दीज, हाँ हाँ, नहीं बहुत हाइलाइट्स है मेरे. मतलब हर एक पेज में एटलीस्ट एक कोई सेंटेंस हाईलाइट है, एक टर्न ऑफ फ्रेज कोई हाईलाइटेड है. लाइक दिस Actually, इज पता है, this is not even a book to read on the go. This is also something that I've realized. Because या I have यू this नीड on टू. the train mostly, or मतलब while going from one place A to place B somehow, and I never could underline. It was frustrating me to the core. I think you are right. I mean, there's so many nuggets na that you can kind of keep here. एंड इसमें और सुमित से सो आई एम क्वाइट हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग. तो मतलब अकेला ऑडियो तो नहीं होता मेरे से, बट आई ओपन द बुक एंड आई आल्सो पुट हेडफोन्स ऑन एंड लिसन टू इट. तो यूजुअली जैसे आई वुड लिसन एट 2x स्पीड, है ना, क्योंकि 1 तो स्पीड काफी स्लो बढ़ा होता के है. स्लो होता है. बट इसमें आई कुड नॉट आई हैड टू स्लो डाउन, क्योंकि मैं यार ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली है. एंड एवरी इट्स नॉट सेंटेंस कि इज Go back na. क्राफ्टेड. इट्स नॉट कि Audio mein प्लॉट, you इट्स can't go ऐसा भी back नहीं and था. read something. हाँ, और एवरी ऐसा भी नहीं सेंटेंस था इज कि प्लॉट क्राफ्टेड इन मिस अ हो वे दैट. जाएगा. हाँ, हाँ कि सेंटेंस पे फोकस करने की जरूरत पड़ रही थी कि या सही लिखा है. नाइस. सेंटेंस हाउ टू जंप. बिकम अ राइटर, वी हैड डन दिस फॉर अ सेशन. तो आई थिंक वो पहले ही पढ़ी थी मैंने, but I read Okay. it again. It's again, I think, one of my favorite stories in this collection of the ones I've Mhm. read. And also this one, वो उसका डिस्कशन होगा क्या, जो बेंजामिन बटन पीछे जाता है टाइम में. जस्ट इससे पहले हाँ 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 हाँ, हाउ टू अभी टॉक अभी टू हुआ योर था. मॉम है ना वो, मॉम. कौन सा. हाँ. The other How one. to एंड talk टेक to. नोट्स ब्रैकेट में. ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली हाँ, रिटन. क्या ही राइटिंग है उसमें. अरे उसमें था एक मिनट में देखता हूँ कहाँ था. The way she jump, कुछ उसी में है ना, the contained become the contained, container हाँ become हाँ contained वाला. हाँ, हाँ उसी में. उसी में है. You believe shopping for clothes is like masturbation. Everyone does it, but it isn't very interesting, and therefore you should be done alone in an embarrassed fashion and never be the topic of party conversation. बहुत Dude, कैसे बीच बीच में बहुत funny है. फनी, बहुत जगह बहुत फनी है उसका. वो लिटरली ADHD अरे नजर आई आता आई हाँ आई वाज ना, अभी मेरे पास वो दूसरे डिवाइस पे है, बट आई वाज हाईलाइटिंग जैसे उसका ना इनटू इट एंड इनटू इट. आई वाज थिंकिंग ऑफ सुमित एंड निखिल उस समय कि भाई ये क्या हरकतें कर रही है. Puns है इसमें भी पंच में कुछ. भर भर के है भाई, हाँ, भर भर के. मतलब वर्ड ये प्ले है, वर्ड लाइक प्ले बहुत अच्छे से किया. ये वाला भी सेंटेंस, हाउ टू बिकम अ राइटर भी सबसे ज्यादा शायद से. Some are smarter than you and some you notice are dumber than you.
You will Dumber than continue, you. unfortunately, to view the world in exactly these terms for the rest of your Rest life. of your life. Oh, Yeah. yeah, I remember the You same. were saying ना वो So वाला true. स्टोरी में कि go like this is the funniest, क्या I उसका मतलब humor का उसने match up कर दिया था. I think I felt that how to become a writer is more funnier than the rest Yeah. कुछ somehow. pointed observations बहुत एक बहुत सही कैरेक्टर का रहते हैं. नाम वो रखती है मोपी डिक, हाँ बेस्ड ऑन मोपी movie. डिक. मैं एक्चुअली वही देखी अभी Your advertisement. boyfriend suggests cycling, your roommate suggests a new boyfriend. New boyfriend. Hilarious. Has happened to the best of us, to be honest. ये भी था कि why write? Where does writing come from? These are questions to ask yourself. They are like, where does dust come from? Or why is there war? Or if there's a God, then why is my brother now a cripple? ऐसे मतलब रैंडमली ऐसे वो कर Randomly ऐसा देगी, थप्पड़ मार के चली गई. ड्रॉप ये ड्रॉप तो कर बहुत देगी. बार हुआ है. फिर यहाँ पे Yeah. she writes, when you get it back, he has written on it, some of your images are quite nice, but you have no sense of plot. Plot. When you are Yeah. home, in the privacy of your own room, faintly scroll in pencil beneath his black paint comments. Plots are for dead people. Poor Poor face. face. This is what I'll do to your feedback. And she's not as a goody type also, right? She's very vindictive or ऐसा. हाँ. It's a very interesting character that she has built. इसके ऊपर बात हुई क्या सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पे? पूरा बुक ही सेकंड पर्सन ही है ना इसका. हाँ हाँ. पूरा नहीं है. व्हाट इज थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में है. ओके, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी वाली. व्हाट Which one is for? What is seized? What is seized? अच्छा Right, अच्छा. right. It फर्स्ट is. पर्सन पॉइंट ऑफ It व्यू is. में. हाँ राइट. My ये foot. फिनिक्स आई थिंक पूछ रहा था मुझे कि अरे ये क्या. ही हैड नेवर रेड सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पहले, अच्छा. तो उसको समझ नहीं आ रहा था. मैंने उसको बोला था कि इट्स अ वे Honest, I ऑफ. have also not read many. ये पढ़ना हाउ टू गेट रिच इन अ राइजिंग एशिया. ओके. सुना है इस बुक के बारे में. मोहसिन हामिद पाकिस्तानी राइटर है. Right. हाँ. हाँ, he has written the Reluctant Fundamentalist और वो पूरा Exit list वाला, right? Exit West वाला. But इसमें this was one of the first instances I'd read of second person POV. And it's done so well. वो and wrapping it in the self help वाला. तो मैंने तो बहुत स्टोरीज लिखे हैं मेरे सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आई फील दैट इज अ हैक बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन. तुम्हें वो इंटीरियोरिटी भी मिलती है और डिस्टेंस फ्रॉम द कैरेक्टर भी मिलता है. ट्रू. बनाता है. इसमें सुमित Prefer a मैं second person POV क्या Sumit? Every time. शॉर्ट पीसेस, नॉट एवरी टाइम, कभी कभी. कौन सी उसकी बात कर रहे हो मोशन हमीद की. हाउ टू गेट रिच इन हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन अ राइजिंग एशिया, ऐसा कुछ नाम है. फनी भी है और सैड भी है, सब ऐसा टिपिकल. इसमें एंड इसमें आई अगेन probably an unfair comparison, but there is इसमें मोपी को वाले में कि she comes up with a very brilliant joke और उसकी friend आती है. She comes up to you like a buddy and puts an arm around your burdened shoulders. Listen, Francie, she says, slow as speech therapy. Let's go out and get a big beer. मतलब उसके ह्यूमर को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं वो कि क्या तू बातें कर रही है. स्लो एज स्पीच क्या थेरेपी. तो मतलब कि हर पंजर थोड़ा अब ऊपर के लेवल का, तो बाकी लोग अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं. वो कह रहे आजा ये छोड़, बियर भी खिलाते हैं. एंड आई फील कि सुमित और निखिल प्रॉब्ली कभी कभी लगता होगा कि यार इतना अच्छा जोक मारा, ये पेजेंट लोगों को समझा भी नहीं. कल पार्टी में मेरे बहुत सारे वेस्ट हो गए. बहुत बार ऐसा Like लगता है कि सुमित लोगों को ऐसा ही लगता होगा. ऐसा. और वो भी है ना कि ज्यादा लाउड माउथ लोग ज्यादा रहे तो खा जाते हैं पूरा एटमॉस्फेयर और जोक बर्बाद कर देते हैं. कल अटल वैसा ही वाले हुआ था. जोक्स दब जाते हैं. अरे अभी लॉरी मूर होती ना तो सुमित के इस टॉपिक पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखती. हाउ to get demotivated when someone cuts your joke. यही हाउ टू गेट फिल्थी रिच इन राइजिंग एशिया. फाउंड इट. हाँ. ओके चलो अब लास्ट स्टोरी पे जाए. हाँ, टू फिल करके. इसमें और मैं तो पढ़ी नहीं है वो. दैट इज दिस बुक जिसपे वो उसका हस्बैंड चीट कर रहा होता है ना.
This is the one. आधे स्टोरीज वैसे ही है क्या इसमें? हाँ, में सारे नया cheating. क्या है बताओ मुझे, क्या है नया? See, नहीं, फर्स्ट that's स्टोरी why. में फर्स्ट स्टोरी And में अच्छा ये हाँ डिस्कस कर लेते हैं, then I have this question अब कीजिए, and Nandini, I sense your frustration. मैं भी Yeah, उसी एंगल से what सोच I रहा mean, if you read the book, you'll realize though there are underlying themes, but you take different things out of different stories. ऐसा नहीं है कि everywhere there is a cheating husband or everywhere there is a mother who is dying. But नहीं, वो तो पुराना ट्रोप इज ट्रोप, राइट? ट्रोप फॉर अ रीजन हाँ कि हाँ, हाँ, बट द but वे शी हैज exactly right. मेड That's इट इन सम स्टोरीज. पहला स्टोरी तो क्या क्या ही ब्रिलियंट था उसमें तो. हाउ टू बिकम द अदर वुमन, स्कैंडलस टाइटल है एक तो. seriously, हाँ, मतलब it will draw you from the beginning कि हाँ क्या Yeah. होगा. But then when you finish the story, you feel like कि, "Shah, my God, what was that?" अब मैं क्या करूँ types. खालीपन. इसमें she इंश्योरेंस portrays वाला है. she portrays emptiness really well. हाँ Like हाँ even after doing a lot, you feel like you've done nothing. वो वाला. हाँ, वो पहली स्टोरी में भी था एम्प्टीनेस, एंड even with the one where the father's the performer and the mother's हाँ taking care, हाँ, उसमें भी कितना emptiness what है. is seized में भी ना. emptiness I think is also another theme that runs through. हम वो डिस्कस कर रहे थे ना, how to go like this, क्या नाम था वो book, go like this. उसमें भी तो Go like this. when she sees the day approaching, she thinks ki, and also Aishwarya कॉन्वर्सेशन highlighted होगा, ठीक है, हाँ कॉन्वर्सेशन होगा, but that never happens. conversation होगा but that never happens, and they will at that point said this is the most loneliest time that you would, that is when you will feel the most loneliest, I guess. So I think that is a common theme around. I mean, it is a common theme around life, I guess. लाइफ ही है. हाँ, वही ना कि एवरीथिंग ऐसा नहीं कि दिस ऑथर्स ओनली, पर मतलब कि उसकी लाइफ एक्सपीरियंस, दिस इज वेरी वेरी रिलेटेबल इन द सेंस, डिस्पाइट नॉट बीइंग अ वुमन, आई कुड Hmm, सी थिंग्स देयर दैट, हाँ मतलब ये तो देखा है, या ये तो अगर खुद के साथ नहीं हुआ है तो आई सीन पीपल गोइंग exactly. थ्रू दिस, एंड या Hmm. उस तरीके से काफी सही लिखी है. When you were talking about the story ना, मतलब since I haven't read it, the euthanasia वाली, for some Hmm. reason I remembered the last leaf, Hmm. and I was thinking about कि कोई तो उसको होता है यार उम्मीद देने वाला, you know. हाँ, which I had forgotten, but as वही ऐश्वर्या ने point out किया कि she wanted that, but कोई आ ही नहीं था, मतलब no one, everyone was हाँ हाँ ठीक किया तूने तूने Yeah, सोच के कर like रही होगी. हाँ, Yeah. in the last leaf जैसे she feels ना कि जब उस पेड़ का आखिरी पत्ता Hmm. गिर जाएगा तो you know she will die, that is how she Yeah. feels, right? तो but the fact that he ties it and make sure कि वो ना गिरे, अभी ना गिरे. हाँ, तो I'm like something like that, you know, nobody in her life कोई bothered hope. to give her any ray of hope. Yeah. True. ये कौन सी स्टोरी है यूथनेसिया वाली? Go like Go like this. this. Actually, You should read it soon. उसमें I don't एक think I have फ्रेंड read है, this. वो एक फ्रेंड करती है कॉन्वर्सेशन. हाँ हाँ हाँ. right. एक फ्रेंड इज ट्राइंग टू से Yeah. कि मैं उस टाइम तुमने जब मुझे बताया, आई वाज इन मतलब उसका रिएक्शन सबसे मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगा कि तुमने जब मुझे बताया Exactly. तो सारे I was दोस्त shocked. लाइक हाँ तेरे से तो यही एक्सपेक्टेड था, चिल ऑल द बेस्ट करके निकल जाते हैं. मैं आई वाज इन And वो ऐसे शॉक टू वैसे रिएक्ट. प्रूव करते हैं कि हाँ. हाँ, आई वाज इन टू मच, मतलब मैं प्रोसेस करने में मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, तो मैं उस टाइम बाहर निकल गई, सोचा और मैं तुझे कॉल कर रही हूँ थोड़ी देर बाद कि भाई तू पागल हो गई है क्या, हाँ. you thought about this. She is the only I one actually trying to have related that to that conversation. lady as well. I mean, I related to that friend too, क्योंकि this is something that I would also have done probably, because जैसे we were discussing Diljit, that how
if it happens to somebody, if someone close to us who decides to do this, how will we react? I don't know. I mean, हाँ, yeah. और एक वियर्ड चीज अगेन, चलो सपोर्टिव होना अलग से, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ फेल्ट एनकरेजमेंट कि हर कोई कह रहा था नहीं तू देख, तू तो बहुत ब्रिलियंट इंसान है, तूने सोचा है तो कुछ सोच के ये कर रही है तो हाँ, सोच के किया होगा, एनेबलिंग हर इंस्टेड ऑफ, हाँ, मतलब रोकना तो चलो एज एज सेड कि वन फ्रेंड डिड, बट अदर्स वर वेरी, हाँ भाई देख तू तू तो समझदार है भाई, हम में से तूने कुछ तू सोच के किया होगा, मतलब यू हैव थॉट ऑफ ऑल द प्रोज एंड कॉन्स. we need to reason with her. And the first and foremost things, probably when somebody says these things to you, you will react with them. You will have an extreme reaction maybe, but then you slow down and probably reason with that person, right? How this is death, right? We are not like getting This married is to someone, and that is also a very big decision, but it can no, there's still no be coming back from out of it. this. I mean, ऐसे तो शादी करने जा रहे हो आप अपने बॉयफ्रेंड से, तो दुनिया भर के लोग जजमेंट देंगे, तुम ऐसे मत कर, सलाह पछताएगी देंगे. करेंगे। यहाँ लोग मरने जा रहे हैं तो उसको कुछ बोले। ओह गॉड, सीरियसली। हाँ, सो लास्ट के बारे में कुछ कहे? नहीं, उसमें उसमें इसमें यही वो, this is the one where she's a kleptomaniac, na, या कि या she keeps stealing. Again, see a flawed protagonist again, and you know that's something wrong, but you don't really hate her for that. मतलब वो पता है कि हाँ एक crime ही कर रही है, but then her mother is in the hospital and husband भी ऐसे कुछ खास नहीं है, तो मत अजीब ही कर है ले ना। भाई. She lives in the hospital. I mean, she's living in the hospital without मतलब विदाउट एनी डायग्नोसिस ओनली कि हाँ मैंने हाँ, मैं बीमार हूँ. अपने आप का एक सेल्फ डायग्नोसिस करके रह रही। What kind of, I mean, all the characters, it's just so strange to see them. ऐसे लोग होते भी हैं, to be honest, who are like, मतलब she keeps mentioning, अच्छा मैं आज, and she does it as a cashier, तो she smart also कि वो receipts वगैरह की उलट पुलट कर लेती है कि कैश काउंटर फिर मैच हो जाता है तो चोरी पकड़ी भी नहीं जाती है. एंड आई एम थिंकिंग कर ले चल कोई बात नहीं, क्या ही हो रहा है. कर ले yeah, भाई, जाने देते. एंड देन शी आल्सो सेज कि शी बाइज रैंडम थिंग, ऐसा नहीं कि शी वही, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट क्लेप्टोमेनिया इज कि यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम स्टीलिंग, है ना, कि इट्स नॉट दैट यू नीड दैट मनी, yeah, इट्स जस्ट कि you have that mental desire control. to, हाँ तो आई थिंक इट्स दैट ओनली, कि उसको ऐसे जरूरत नहीं, शी इज बाइंग ऐसे फैंसी थिंग्स विद द मनी दैट शी इज स्टीलिंग, ऐसे नहीं कि घर की रोटी नहीं चल रही है, तो तो मजबूरी भी नहीं है, बट शी स्टिल डूइंग इट, एंड शी इज डूइंग इट क्लेवरली आल्सो, कि वो मतलब कैश रजिस्टर में वो इनवॉइसेस वगैरह वो मैच कर देती है कि उसकी चोरी पकड़ी भी ना जाए, एंड ऑल दैट. एंड फिर उधर मम्मी है वो अपना अलग वो कर रही है कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ. एंड शी, दैट पार्ट इज वेरी फनी कि आई डोंट नो इफ एंड आई थिंक हर मदर इज जस्ट प्रिटेंडिंग कि she tells कि टॉम, तो टॉम कौन है, and that is her husband of 6 years, so Yeah. obviously the mother knows कि टॉम कौन है, and her mother is कि अच्छा who is this Tom guy. तो Yeah, and when she loses her job, and it's like she does not even, मतलब एक होता है ना दुख जताना कि अरे यार जॉब चली गई, she's like, she knew that this is going to happen someday. and eventually हाँ पकड़ी तो जाऊंगी. Yeah. बट हाँ मतलब बहुत she has taken ऐसे, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टोरी, मतलब कोई ऑब्वियसली कोई कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है इसमें, इवन द पीपल जिसकी पीओवी से हम देख रहे हैं आर वेरी फ्लॉड, तो हाँ, एंड शी स्टिल समहाउ फाइंड द वे टू एटलीस्ट सिंपैथेटिक तो बना दिया है उन्हें, इफ नॉट रिलेटेबल देन I think सिंपैथेटिक तो बना दिया. हाँ, I हाँ. think she has made the characters human. I think उसके सारे characters are so एग्जैक्टली. human. You feel like you pass them by every day when you go for a walk. Or you could be one of them. Or मतलब कि in some way it could be, yeah. And the good thing she's given almost everyone a sense of humor. So that's always a quality that you gravitate towards. यार ये funny तो है, चल ठीक है चोरी कर रही है लेकिन funny तो है. तो वो भी है. Yeah. I mean, this also signifies na we have a lot more to ourselves than just one characteristics. मतलब as a human 100%. being. So So should I I stop the think recording?
चलेगा. हाँ, आराम से क्लोजिंग रिमार्क दे दो. Yep. Thank you so much, guys, for reading this book. Whoever has stayed on till now and whoever were participating before, thank you so much. I think Thank we you. Such had a beautiful choice. I don't think it would have come to my radar. And Not never कोई नहीं सजेस्ट करता. ये इंस्टाग्राम वाले मेरे बेकार है. कुछ नहीं पता. पीयू के Yes, इंस्टाग्राम वाले yes, अच्छे हैं. start definitely. following Thank you, मेरे Piyu. Instagram. No problem. I'm glad. I was really on the fence, and then yeah, when I got into this discussion, I felt ki baap re. I mean, we could write another book about self-help, discussing the whole book all over again. I think. Yeah. Thank you so much, guys. Very enriching discussion. Very much. yeah, great fun. All right.